हाँ मैडम आरंभ करिए। ना ना बर्तमान अनम्यूट हेलेनी। हाँ हाँ। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। मेरा वॉइस आ रहा है? कोई लिख कर दे, बता दो थोड़ा। वॉइस आ रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है। ओके। ठीक है। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे, फर्स्ट एक बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। कंपनी कितने तरह का होता है? टाइप्स ऑफ कंपनीज। जनरली कंपनी तीन तरह का है, या दो तरह का मैं बोल सकता हूं। एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक स्पेशल टाइप का प्राइवेट कंपनी। तो पहले प्राइवेट कंपनी क्या है समझेंगे, फिर वन पर्सन कंपनी क्या है समझेंगे, फिर पब्लिक कंपनी क्या है समझेंगे। तो पहले प्राइवेट कंपनी क्या है। मैं बताया था प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें दो तीन फीचर होता है। पहला फीचर क्या है, ये अपना आर्टिकल में दो तीन रिस्ट्रिक्शन लगाता है। आर्टिकल मतलब मैं बताया था कंपनी का दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डील्स विथ external affairs and article of association deals with rules regulations of the company relating to its internal affairs। तो प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दो तीन रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल में बोलता है, मैं अपना कंपनी का मैक्सिमम मेंबर 200 रखूंगा। कितना रखूंगा? 200। मैक्सिमम मेंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज 200। इसका मतलब आर्टिकल बोलता है एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग ही रह सकते हैं। मैक्सिमम 200 पीपल कैन बी देयर इन एनी प्राइवेट कंपनी। 200 पीपल। ओके। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर में रिस्ट्रिक्शन होता है। इसका मतलब मैक्सिमम शेयर 200 रहेगा। इस कंपनी का शेयर इस ट्रांसफर होने में कुछ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन मतलब प्राइवेट कंपनी बोलेगा मेरे कंपनी का शेयर सिर्फ डॉक्टर लोगों को जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। या मेरे कंपनी का शेयर सिर्फ इंजीनियर लोगों को ट्रांसफर हो सकता है। मेरा कंपनी का शेयर सिर्फ एक एक फैमिली के मेंबर्स के बीच में ट्रांसफर हो सकता है। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ द प्राइवेट कंपनी। और सबसे बड़ा चीज है, ये पब्लिक से पैसा मांगता नहीं है। अपना पब्लिक इश्यू लाएगा ही नहीं। ये अपना पैसे की जुगाड़ अपने आप करे। तो जो कंपनी में तीन फीचर्स होता है, मैक्सिमम मेंबर 200 होता है, और उसका शेयर का ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगता है, और वो पब्लिक से पैसा मांगेगा नहीं, ऐसा बोलकर आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी। बेटा प्राइवेट कंपनी समझ में आ गया? प्राइवेट कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसमें मैक्सिमम मेंबर 200 हैं, उसके शेयर का ट्रांसफरेबिलिटी में रिस्ट्रिक्शन है, और वो कभी जिंदगी में पब्लिक से पैसा मांगेगा नहीं, ऐसा बोलकर वो अपना आर्टिकल में लिखा है। तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाता है। सो प्राइवेट कंपनी एक कंपनी का फॉर्म है, छोटा फॉर्म ऑफ कंपनी, जहां पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाकर कंपनी में तीन चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते। सो व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी में बताया था, प्राइवेट कंपनी डिफाइन हुआ है सेक्शन 268 में। बोलता है इट ये कंपनी व्हिच रिस्ट्रिक्ट बाय इट्स आर्टिकल द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, and prohibits any invitation to public for shares or debenture, or prohibit
इनविटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो ये पब्लिक से कोई पैसा लेता नहीं। इस तरह का कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी बोले। बेटा प्राइवेट कंपनी, आई होप प्राइवेट कंपनी इज क्लियर। एक बार प्राइवेट कंपनी समझ गया, अभी हम समझेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी, दैट इज वन पर्सन कंपनी या ओपीसी। व्हाट इज वन पर्सन कंपनी या ओपीसी? ओपीसी क्या होता है? मैं बताया था, ओपीसी एक स्पेशल टाइप का प्राइवेट कंपनी है। एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 आदमी की जरूरत पड़ता है। So in case of private company, the minimum members required is 2, but the maximum is 200. But one person company is a special type का प्राइवेट कंपनी है, जहां पर एक आदमी ही प्राइवेट कंपनी बना सकता है। इट इज ए स्पेशल टाइप का प्राइवेट कंपनी है, जहां पर मेंबर होते हैं 1, इसीलिए उसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। सो यहां पर मिनिमम मेंबर 1, मैक्सिमम मेंबर 1, एक ही आदमी का कंपनी है, इसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। सो वन पर्सन कंपनी में जब मेमो बनेगा, वहां पर एक ही आदमी साइन करे। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, वो जो मेंबर बनेगा एक ही आदमी, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। तो 2 चीज होगा, तो इंडियन सिटीजन एंड इंडियन रेसिडेंट कैन प्रिपेयर और फॉर्म ए वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी जब भी बनता है, उसके साथ में आपको एक नोमिनी की जरूरत पड़ता है। नोमिनी इज मस्ट इन केस ऑफ ए वन पर्सन कंपनी। नोमिनी का मतलब क्या है? अगर जो आदमी कंपनी बनाया है वो अगर मर जाए या इनकैपेसिटेड हो जाए, तो उसका शेयर किसके पास में जाएगा, उसका कंपनी किसको ट्रांसफर हो जाएगा, उसको बोलते हैं नोमिनी। और नोमिनी का कॉन्सेंट भी चाहिए। कॉन्सेंट मतलब मैं इस कंपनी का नोमिनी बनने के लिए तैयार हूं, वो लिखेगा, तो वन पर्सन कंपनी हो सकता है। अच्छा, वन पर्सन कंपनी में नोमिनी भी चेंज हो सकता है। जो आदमी बनाया है वन पर्सन कंपनी को, जो मेंबर है, वो जब चाहे नोमिनी को चेंज कर सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा आरओसी। ओके, सो दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी दैट इज नोन एज वन पर्सन कंपनी। सो कंपनी 2 तरह का होते हैं, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी या वन पर्सन कंपनी क्या बताया? वन पर्सन कंपनी में सारा का सारा प्रोविजन प्राइवेट कंपनी वाला लगता है। ये एक स्पेशल टाइप का प्राइवेट कंपनी। अभी हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के बाद पब्लिक कंपनी के बारे में। व्हाट इज ए पब्लिक कंपनी? प्राइवेट कंपनी गया, अभी हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए पब्लिक कंपनी? नाउ सेक्शन 27 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? कंपनी एक्ट बोलता है पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कंपनी पब्लिक कंपनी है। इसका मतलब जो कंपनी प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक। इट हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑलवेज। तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है और उसका कैपिटल मिनिमम 5 लाख रुपया होगा। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी? एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ता है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 आदमी की जरूरत पड़ता है। और पब्लिक कंपनी का खासियत होता है, यहां पर मेंबरशिप के नंबर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन।
The maximum number of shareholders in a public company can be unlimited. There is no restriction. और इस पब्लिक कंपनी का शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है, एक आदमी से दूसरे आदमी को इजीली ट्रांसफरेबल है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हमारे जेब में पैसा है, हम किसी को दे सकते हैं, उसी तरह से पब्लिक कंपनी का शेयर है, हम एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करके किसी को भी वो शेयर बेच सकते हैं। क्लियर। और पब्लिक कंपनी अपना पैसे के लिए कहां से मांगता है पैसा? पैसा मांगता है जनरल पब्लिक से। इट इनवाइट्स मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक थ्रू आईपीओ, एफपीओ। जनरल पब्लिक से ये पैसा मांगता है, इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी गया और पब्लिक कंपनी गया, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। Always there is a confusion between public company and government company. बेटा पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी एक अलग कॉन्सेप्ट है। पब्लिक कंपनी, कंपनी दो तरह का है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का शेयर इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होगा, पब्लिक कंपनी का शेयर इजीली ट्रांसफरेबल होगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 आदमी चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 आदमी चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 है, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर अनलिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक से पैसा मांगा नहीं जाता है, पब्लिक कंपनी में पब्लिक से पैसा मांगा जाता है। लेकिन पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होता है। यही चीज ये जो चीट फंड वाले हैं वो लोगों को बुद्धू बना रहे। देखो हम पब्लिक कंपनी है मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, हमारे यहाँ पर पैसा डालो, पैसा ठीक होगा रहेगा। लेकिन चीट फंड कंपनी जितना बने थे सब पैसा लेकर भागे। लोग गवर्नमेंट कंपनी सोच रहे थे, गवर्नमेंट के पीछे बोले, गवर्नमेंट बोला ये मैं पब्लिक, पब्लिक कंपनी इज नॉट गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक अलग चीज है। तो व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी अभी बात करेंगे। बेटा पब्लिक कंपनी पहले समझ लिया, फिर पब्लिक कंपनी कितने तरह का होते हैं समझ लेंगे, फिर गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। पब्लिक कंपनी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और एक को बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। व्हाट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या है? लिस्टेड और अनलिस्टेड में क्या फर्क है? अनलिस्टेड और लिस्टेड में यही फर्क है, जिस पब्लिक कंपनी का शेयर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल होता है उसको बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। सो लिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, आइदर बीएसई में या एनएसई में या इंडिया आईएनएक्स में या कोई रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल होता है, उसको बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और जिस पब्लिक कंपनी का शेयर प्राइवेटली परचेज सेल होता है, ओवर द काउंटर परचेज सेल होता है, उसको बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी का शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल होगा। परचेज सेल होने के लिए उस कंपनी को उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करना पड़ेगा। लिस्टिंग मतलब उसका मेंबर बनना पड़ेगा। सो प्राइवेट कंपनी का शेयर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में मिलता नहीं है, ओनली पब्लिक कंपनी का शेयर मिलता है। सारा पब्लिक कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ओनली फ्यू पब्लिक कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज। मैं बताया था इंडिया में 11 लाख कंपनी है, 11 लाख में से 10 लाख कंपनी प्राइवेट कंपनी है, बाकी 1 लाख बचे वो पब्लिक कंपनी में। वो 1 लाख में से 95,000 कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर परचेज सेल नहीं होता है। 4-5 हजार कंपनी ऐसे हैं जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड होता है। वो 5,000 कंपनी को हम बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी और बाकी सबको बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक। बेटा समझ में आ गया? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी।
तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दो इंपॉर्टेंट कंपनी है। सो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है हम बात करेंगे। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 आदमी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 आदमी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 आदमी, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड आदमी। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए बिजनेस करने के लिए, पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, दो सर्टिफिकेट चाहिए बिजनेस करने के लिए। प्राइवेट कंपनी का शेयर का ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, पब्लिक कंपनी का शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं लेता है, इसीलिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करता है, उसका पब्लिक इशू आता नहीं है, तो वो पब्लिक से पैसा मांगता नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पैसा पब्लिक से मांगना है इन फॉर्म ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। एक प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करना जरूरी है। अगर प्राइवेट कंपनी में मीटिंग होता है, वहां पर मिनिमम कितने मेंबर होंगे जो मीटिंग को वैलिड बनाएंगे, उसको बोलते हैं कोरम ऑफ द मीटिंग। प्राइवेट कंपनी में कोरम, कोई भी मीटिंग होता है उसका कोरम 2 मेंबर होंगे तो मीटिंग वैलिड है। पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर होंगे तो मीटिंग वैलिड है। ओके। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट कंपनी में बहुत सारा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, प्राइवेट कंपनी को बहुत सारा प्रिविलेज मिलता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में डॉक्यूमेंट कॉम्प्लायंस बहुत ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाता है, और पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगाता है। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपया होता है। बेटा समझ में आ रहा है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक। अभी हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी। ये गवर्नमेंट कंपनी क्या है उसके बारे में बात करें। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ओवर। अभी हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी क्या है। व्हाट इज ए गवर्नमेंट कंपनी? मैं बताया था सारा पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी एक स्पेशल टाइप का कंपनी है, वो कंपनी क्या है हम अभी बात करें। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? एक से वन। व्हाट इज ए गवर्नमेंट कंपनी? व्हाट इज ए गवर्नमेंट कंपनी? बेटा ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट कंपनी क्या है। गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी अलग अलग है, ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिस कंपनी में 51% शेयर गवर्नमेंट के पास में है। वो प्राइवेट कंपनी हो सकता है, पब्लिक कंपनी हो सकता है। कोई भी कंपनी जिस कंपनी का 51% शेयर गवर्नमेंट के पास में है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। 51 क्यों? आधा से ज्यादा, आधा है 50%, 50% ज्यादा 51%। तो किसी भी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट के पास में है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। सो गवर्नमेंट मतलब आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऐसा भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 35% है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 20% है।
टोटल मिलाकर 55 हो गया, जो 51 से ज्यादा है तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाए। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसका 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास में। सारा पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है, पब्लिक कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है। जिस प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट का हिस्सेदारी 51% या उससे ज्यादा है, उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। जैसा हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट कंपनी। बेटा गवर्नमेंट कंपनी क्लियर ना? नेक्स्ट हम बात करेंगे और एक तरह का कंपनी जिसको हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी। ये क्या है? ये एक नया फीचर कंपनी एक्ट 2013 के बाद में आया है, स्मॉल कंपनी। एक स्मॉल कंपनी, व्हाट इज स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी क्या है? ये कॉन्सेप्ट आया 2013 के बाद में, जे जे ईरानी कमेटी का, उसके चलते एक कंपनी बना जिसका नाम होता है स्मॉल कंपनी। ये स्मॉल कंपनी क्या है? छोटा कंपनी। नॉर्मली कंपनी के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटरी कॉम्प्लियंस होता है, उसको ये फाइल करना है, वो फाइल करना है, वो फाइल करना है। तो सब लोग, जो छोटा कंपनी है वो इतना सारा डॉक्यूमेंट बना नहीं सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, तुम अगर कंपनी हो और तुम्हारे पास कुछ फीचर्स हैं, स्मॉल कंपनी वाला फीचर्स है, हम तुम्हारा डॉक्यूमेंटरी कॉम्प्लियंस थोड़ा कम कर दें, उसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी। सो स्मॉल कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी डिफाइन हुआ है सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये बोलता है स्मॉल कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसका पेडअप कैपिटल 50 लाख रुपए से कम है और उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है। पेडअप कैपिटल 50 लाख से कम है या उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। टर्नओवर मतलब सेल्स। तो तुम्हारे कंपनी में अगर पेडअप कैपिटल 50 लाख से कम है या तुम्हारे बिजनेस में टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तुम अपना कंपनी को स्मॉल कंपनी के लिए तुम क्लेम कर सकते हो। आरओसी के पास बोलोगे मेरे को मेरा कंपनी एक स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी में क्या फायदा होगा? स्मॉल कंपनी में फायदा होगा तुमको बहुत सारा कॉम्प्लियंसेस कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिविलेजेस या एग्जम्पशंस फॉर स्मॉल कंपनी। दीज आर द प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस फॉर स्मॉल कंपनी। नो नीड टू प्रिपेयर एनुअल जनरल मीटिंग। इस तरह का बहुत सारा फीचर्स हैं स्मॉल कंपनी के बारे में, तुमको वो सब फीचर्स पढ़ना पड़ेगा। दीज आर द स्पेशल प्रिविलेजेस अवेलेबल फॉर ए स्मॉल कंपनी। कंपनी एक्ट में बहुत सारा जगह पर ये सब प्रिविलेजेस दिया हुआ है, स्मॉल कंपनी को ये सब काम के में छूट मिला हुआ है। दीज आर द सेक्शंस अंडर व्हिच देयर आर प्रिविलेजेस अवेलेबल टू स्मॉल कंपनी। अभी हम और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंपनी के टाइप्स में, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ये क्या है? होल्डिंग कंपनी क्या है?
सब्सिडरी कंपनी क्या है? सपोज दो कंपनी है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी सी। सपोज कंपनी ए कंपनी बी और कंपनी सी को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? कंपनी ए कंट्रोल करता है कंपनी बी और कंपनी सी। सो कंपनी ए इस केस में हो जाएगा होल्डिंग कंपनी। जो कंपनी कंट्रोल करता है दूसरे कंपनी को उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जो कंपनी कंट्रोल्ड होते हैं बी और सी, ये दोनों कंपनी बन जाएंगे सब्सिडियरी कंपनी। तो दो तरह का कंपनी हो गया, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। इफ वन कंपनी controls another company, the company which control is known as holding company, and the company so controlled by other is known as subsidiary company। बेटा समझ में आ गया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या है? अच्छा, एक कंपनी दूसरे कंपनी को कैसे कंट्रोल करेगा? तुम बोलोगे कंट्रोल करने का दो तीन तरीका है। पहला, सेकेंड कंपनी में वो उसका शेयर का होल्डिंग कितना परसेंट हो जाए? 51% से ज्यादा हो जाए। मतलब ए कंपनी का बी कंपनी में 51% से ज्यादा क्या हो जाएगा? शेयर होल्डिंग हो जाएगा। इसका मतलब बी कंपनी में जो होगा वो कौन बोलेगा? ए कंपनी बोलेगा। अगर 51% शेयर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ए कंपनी बी कंपनी को कंट्रोल करेगा। या नहीं तो वोटिंग पावर, उस कंपनी में वोट होगा, तुम्हारे पास 51% से ज्यादा वोट है। या नहीं तो उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुम कंट्रोल करते हो। तीन सिचुएशन में हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास ज्यादा शेयर है, ज्यादा वोटिंग पावर है, या उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम कंट्रोल करते हैं। अगर इस तरह का हो गया काम तो जो कंपनी कंट्रोल करता है उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जाता है उसको सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। सो कंट्रोल होता है, कंट्रोल इज बाय composition of board of directors or holding more than half of the share capital or more than half of the voting rights। इसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। और एक तरह का कंपनी होता है जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। मैं बताता ये क्या है। कंपनी में लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर का प्राइवेट प्रॉपर्टी कभी भी क्लेम किया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो बताते हैं हमारे शेयर कंपनी का शेयर होल्डर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इंडिया में ऐसा कंपनी है ही नहीं, लेकिन बाहर के कंट्री में अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं। इंडिया में जितने भी कंपनी हैं सब कंपनी का लाइबिलिटीज लिमिटेड है। इंडिया के बाहर में अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होते हैं। जहां पर कंपनी में कुछ ऊंच नीच होता है तो उसके शेयर होल्डर का प्राइवेट प्रॉपर्टी सोल ट्रेडिंग बिजनेस की तरह, पार्टनरशिप बिजनेस की तरह क्लेम किया जा सकता है। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी एक क्वेश्चन होता है। कंपनी क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज एक क्वेश्चन आता है। अभी थोड़ा हम पढ़ेंगे कंपनी में दो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन जो कंपनी शुरू करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर, और जो कंपनी चलाते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टर। तो पहले प्रोमोटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोमोटर क्या है, डायरेक्टर क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रोमोटर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे।
फर्स्ट, प्रमोटर क्या है? मैं बताया था किसी भी कंपनी को जो शुरू करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर एक एक ऐसा आदमी है जो कंपनी को आइडिया से आईपीओ तक लेता है। मतलब कंपनी शुरू होने का आइडिया उसके दिमाग में आता है और कंपनी को आईपीओ तक वो लेता जाता है। आईपीओ मतलब कंपनी का पैसा रेज करने का आईपीओ, आइडिया टू आईपीओ जो काम करता है उसको प्रमोटर बोलते हैं। तो promoter is a person who initiates the setting up of a company, control its working. Promoter identify business opportunity, make detailed investigation of ideas, arrange the signatories to the memo, prepare necessary documents, and incorporate a company. So promoter नहीं होगा तो कोई कंपनी बनेगा नहीं। सो प्रोमोटर कंपनी को पैदा करता है, कंपनी उसका ब्रेन चाइल्ड होता है। किसी भी कंपनी का ब्रेन चाइल्ड, उसका प्रोमोटर का ब्रेन चाइल्ड वो कंपनी। सो द मेन फंक्शन ऑफ ए प्रोमोटर इज टू प्लानिंग एंड एक्सेसिंग पॉसिबिलिटीज, discovering idea for the company, make detailed investigation about the demand, find suitable person who can be directors of the company, who can be partners in the company, select the bank advisor, legal advisor, auditors, underwriter for the company, prepare essential document for formation of the company, helps in drafting memo and article of the company, submit all documents required for incorporation of the company, arrange advertisement, prepare prospectus of the company, and make all the expenses from idea generation to IPO. All expenses are done by promoters. All these expenses is known as preliminary expenses. So promoter meet the preliminary expenses for floating the company. And promoter make contract with vendors, underwriters, managing director of the company. Promoter raise required finance for the company, and he make proper arrangement for the office of the company. सो प्रोमोटर के दिमाग में कंपनी आता है और कंपनी फॉर्म होने तक सारा का सारा काम प्रोमोटर करता है। तो प्रोमोटर के दिमाग में कंपनी था, कंपनी ये है, ये प्रोमोटर का दिमाग है, ये दिमाग से धरती पर आने तक का सारा काम क्या करता है? प्रोमोटर करता है। एक बार धरती पर आया और ये कंपनी को वो लोगों के हाथ में देकर खुद रह सकता है या कंपनी छोड़कर भी जा सकता है। बहुत सारा कंपनी में तो ये जो लोग होते हैं बाद में उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। प्रोमोटर कंपनी को बनाकर किसके हाथ में दे देता है? शेयर होल्डर के हाथ में दे देता है। कैसे देता है? प्रोमोटर के दिमाग में आइडिया में कंपनी होता है और वो आईपीओ लाकर कंपनी को डिफरेंट लोगों को बेचकर चला जाता है। खुद जा सकता है या रह भी सकते हैं खुद शेयर होल्डर, लेकिन वो और प्रमोटर होकर नहीं रहेगा, शेयर होल्डर होकर रहेगा। कंपनी का आइडिया आ गया, प्रमोटर खत्म हो गया, आईपीओ आ गया, प्रमोटर का रोल खत्म हो गया। जब तक आईपीओ नहीं आया है प्रमोटर है, जिस दिन आईपीओ आ गया प्रमोटर शेयर होल्डर बन जाएगा। शेयर होल्डर होकर रह सकता है या नहीं तो वो भी चला जा सकता है। सो अगर प्रमोटर चला जाता है तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया है उसको लेने का राइट उसके पास में है, उसको बोलते हैं राइट्स ऑफ प्रमोटर। और इतना काम कंपनी के लिए किया है तो प्रमोटर को रेम्यूनरेशन इसके लिए रिसीव करने का राइट है। एंड प्रमोटर हैज ए राइट टू रिसीव प्रोपोर्शनेट मनी फ्रॉम द को प्रमोटर्स। को प्रमोटर्स मतलब 5 आदमी मिलकर भी प्रमोशन कर सकते। अभी व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए प्रमोटर? प्रमोटर का लाइबिलिटी क्या है? प्रमोटर कंपनी को सिर्फ बनाता है, प्रमोटर का कंपनी नहीं होता है, कंपनी शेयर होल्डर्स का होता है। तो प्रमोटर जब भी कंपनी बनाएगा
कोई सीक्रेट प्रॉफिट करेगा नहीं। प्रमोटर कुछ ऐसा काम करेगा नहीं जिससे उसका लाइबिलिटी क्या हो जाए, अनलिमिटेड हो जाए। प्रमोटर कोई स्टैट्यूटरी मिस्टेक करता है उसके लिए उसको लाइबल होगा। प्रमोटर प्रोस्पेक्टस में कोई गलत चीज लिखता है उसके लिए वो लाइबल होगा, क्योंकि उस टाइम तक शेयर होल्डर आए नहीं है। शेयर होल्डर आएंगे जब प्रोस्पेक्टस आएगा, आईपीओ आएगा, तो शेयर होल्डर आएंगे। उससे पहले जितना काम हुआ है उन सबके लिए प्रमोटर जिम्मेदार होता है। और अगर कोई गलत काम हुआ है तो प्रमोटर विल बी पर्सनली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ दोज। इसका मतलब प्रमोटर कोई सीक्रेट प्रॉफिट किया है वो पर्सनली लाइबल है। प्रमोटर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब तक कंपनी नहीं बना है वो पर्सनली लाइबल है। प्रमोटर कोई स्टैट्यूटरी मिस्टेक किया है, प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत चीज लिख दिया है, कंपनी नहीं बना है तब तक, तो प्रमोटर लाइबल है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोटर्स। कुछ प्रमोटर होते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर। प्रोफेशनल प्रमोटर का मतलब उनका काम है कंपनी, नया नया कंपनी बनाना और कंपनी को शेयर होल्डर के हाथ में देकर फिर नया कंपनी बनाने में लग जाना। उनको बोलते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर। उनका काम है कंपनी बनाना, आइडिया को आईपीए तक लाने का काम है प्रमोटर्स का। कुछ लोगों का धंधा यही है, एक कंपनी बनाएंगे, फिर उस कंपनी को आईपीओ लाएंगे, शेयर होल्डर के हाथ में दे देंगे, दूसरा कंपनी फिर बनाने में लग जाएंगे। उस तरह का प्रमोटर को बोलते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर्स। टेक्निकल प्रमोटर्स, जिसके पास में कोई टेक्निकल नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उस तरह का लोग अगर स्पेशलाइज नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग करके कोई नया बिजनेस बनाते हैं उनको बोलते हैं टेक्निकल प्रमोटर्स। कुछ एंटरप्रेन्योरल प्रमोटर्स होते हैं। सपोज तुम एक एंटरप्रेन्योर करना चाहते हो, कोई नया वेंचर करना चाहते हो, इसीलिए कंपनी बनाना चाहते हो, तुम एंटरप्रेन्योरल प्रमोटर हो। तुम एक बिल्डर बनना चाहते हो, उसके लिए एक कंपनी बनाते हो, तो एंटरप्रेन्योरल प्रमोटर। कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी प्रमोटर का रोल प्ले करते हैं। सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी बनाना चाहता है, एसबीआई लाइफ, तो एसबीआई लाइफ बनाया, तो वो क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर। गवर्नमेंट भी कुछ कंपनी को बनाता है, उस टाइम में गवर्नमेंट भी प्रमोटर का रोल प्ले कर सकता है। जैसे ओएनजीसी, सेल, वेल, इस तरह का कंपनी में गवर्नमेंट बनाया है, तो गवर्नमेंट भी प्रमोटर का रोल प्ले कर सकता है। तो प्रमोटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो लिख सकते हैं प्रमोटर क्या है, उसका राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, उसके बारे में। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे और एक तरह का इंपॉर्टेंट पर्सन कंपनी में है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। प्रमोटर ओवर, अभी डायरेक्टर। बेटा प्रमोटर बना, प्रमोटर बनने के बाद कंपनी बन गया, प्रमोटर कंपनी बनाया, आइडिया को आईपीओ में ले आया। एक बार आईपीओ आ गया, कंपनी का ओनर कौन बन गए, शेयर होल्डर्स बन गए। लेकिन सारा शेयर होल्डर्स कंपनी चला नहीं सकते हैं। वो शेयर होल्डर्स कुछ लोगों को सिलेक्ट या इलेक्ट करते हैं कंपनी चलाने के लिए, उस लोगों को डायरेक्टर बोला जाता है। सो हु इज ए डायरेक्टर? डायरेक्टर इज एक पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू मैनेज ए कंपनी। कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स बट कंपनी इज मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। कंपनी को डायरेक्टर्स लोग चलाते हैं, कंपनी को शेयर होल्डर्स लोग ओन करते हैं। ये शेयर होल्डर्स मिलियंस में होते हैं, ये सब शेयर होल्डर्स है, ओनर्स है। दीज आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन इतने सारा लोग तो कंपनी चलाएंगे नहीं, दो तीन चार लोगों के हाथ में कंपनी चलाने को दिए हैं, दे आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी।
सपोज एक कंपनी में 5-6 डायरेक्टर्स, ये 6 डायरेक्टर्स मिलकर हम बोलते हैं इसको बोर्ड। क्या बोलते हैं? बोर्ड। व्हाट इज बोर्ड? कंपनी में बोर्ड का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। तो इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं या बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड, बीओडी। इसका मतलब जो कंपनी का बोर्ड का मेंबर है वही कंपनी का डायरेक्टर है। सो डायरेक्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी। कंपनी का बोर्ड का मेंबर्स को हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। द बोर्ड मैनेजेस द कंपनी। कंपनी को मैनेज बोर्ड करता है। बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बीओडी द कंपनी। सो डायरेक्टर्स मीन्स ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। बोर्ड का मेंबर डायरेक्टर होता है, बोर्ड मेंबर। और बोर्ड का मेंबर कंपनी चलाने के लिए ऑथराइज्ड होता है। दे रन द कंपनी, दे मैनेज द कंपनी। क्लियर? अगर कोई आदमी कंपनी चला रहा है लेकिन बोर्ड का मेंबर नहीं, अरे ये बड़ी डेंजरस चीज है। कंपनी चला रहा है लेकिन बोर्ड का मेंबर नहीं, लेकिन कानून के आंख में वो डायरेक्टर बन जाए, बोर्ड का मेंबर हो ना हो। अगर तुम कंपनी चला रहे हो लेकिन बोर्ड का मेंबर नहीं हो, कंपनी एक्ट तुमको मान लेगा यू आर ए डीम्ड डायरेक्टर और यू आर ए शैडो डायरेक्टर। तुम छुप छुप कर कंपनी चला रहे हो लेकिन सामने नहीं आते हो, लेकिन लीगली तुम कंपनी का डायरेक्टर बन गए। तुम बोर्ड का मेंबर हो या ना हो, अगर दाऊद इब्राहिम कोई कंपनी बना रहा है और 10-12 लोगों को रखा है बोर्ड चलाने के, लेकिन इनडायरेक्टली पीछे से कंपनी कौन चला रहा है? डायरेक्टर, दाऊद। तो दाऊद बन जाएगा उस कंपनी का डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर? डीम्ड डायरेक्टर या शैडो डायरेक्टर। इसका मतलब जो कंपनी, जो पर्सन कंपनी चलाता है वो डायरेक्टर है, वो बोर्ड का मेंबर हो ना हो। बोर्ड का मेंबर है तो एक्चुअल डायरेक्टर है, बोर्ड का मेंबर नहीं है फिर भी कंपनी चलाता है, देयर इज एम्पल एविडेंस, तो हम लीगली उसको डायरेक्टर मानेंगे। कौन सा डायरेक्टर? डिम्ड डायरेक्टर और शैडो डायरेक्टर। जैसे डायरेक्टर का लाइबिलिटीज होता है, इस शैडो डायरेक्टर्स का भी लाइबिलिटीज होगा, तुम चाहे बोर्ड का मेंबर हो या ना हो। ठीक है बेटा, कंपनी एक्ट में स्पेशली लिखा गया है ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? सिर्फ इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकते हैं, आदमी डायरेक्टर बन सकता है। कोई कंपनी का, कोई कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, सिर्फ आदमी डायरेक्टर बन सकते हैं। इंडिविजुअल नेचुरल ह्यूमन बींग्स कैन बी डायरेक्टर। तो कोई पार्टनरशिप फार्म किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है, कोई कंपनी दूसरे कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। क्लियर? अभी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी जनरली 3 तरह का है: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी जे स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये टेबल देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होगा, और एक वन पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होगा। मिनिमम डायरेक्टर समझ में आ गया? पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2, वन पर्सन कंपनी में 1। But there is a restriction on maximum number of directors. How much is the maximum number of directors? 15. Public हो, private हो, one person company हो, maximum
15 डायरेक्टर्स रह सकते हैं। अगर आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आपके कंपनी में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं। तो नॉर्मली 15 से ज्यादा नहीं होते हैं डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 होते हैं, लेकिन 15 से ज्यादा हो सकता है। कंपनी का मेंबर्स अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दें तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 से ज्यादा हो सकते। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। और 1% कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। दिस इज दी डायरेक्टर्स। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 बोला वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। वुमेन डायरेक्टर क्या है? मेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर क्या है? ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कंपनी एक्ट 2013 में प्रोविजन है। रूल 2014 में आया अंडर रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स 2014। द फॉलोइंग कंपनी shall अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। मतलब जो डायरेक्टर होंगे उनमें से मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर होगा। कौन से कंपनी में? एवरी लिस्टेड कंपनी। बेटा लिस्टेड कंपनी मतलब वो कौन सा कंपनी होगा? पब्लिक कंपनी लिस्टेड होगा। जो कंपनी लिस्टेड है, इंडिया में 5-6 हजार लिस्टेड कंपनी है, जो उसका शेयर कहां पर मिलता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, या इंडिया का कोई स्टॉक एक्सचेंज में जिसका शेयर ट्रेडिंग होता है, उन कंपनी में मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर होगा ही होगा। फिर उस जो कंपनी में पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, मतलब आपकी कंपनी में कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नहीं तो आपका कंपनी का टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल 300 करोड़ से ज्यादा है। आइदर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या नहीं तो सेल 300 करोड़ से ज्यादा है, तो उस कंपनी में एटलीस्ट बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर रखने के लिए वो बाउंड है। समझ में आ रहा है वुमेन डायरेक्टर क्या है? अभी हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। एक होता है ऑर्डिनरी डायरेक्टर और एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। व्हाट इज ऑर्डिनरी डायरेक्टर? डायरेक्टर, ऑर्डिनरी डायरेक्टर कौन है? कंपनी का डायरेक्टर कंपनी चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? मीटिंग करके चलाते हैं। उस मीटिंग को क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। बोर्ड मीटिंग हर दिन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन बोर्ड मीटिंग होता है, जो डायरेक्टर आता है, फिर मीटिंग में हिस्सा लेता है, अपना ओपिनियन बताता है और चला जाता है, उस टाइप का डायरेक्टर को बोलते हैं ऑर्डिनरी डायरेक्टर। सो ऑर्डिनरी डायरेक्टर हर दिन कंपनी आता नहीं है, वो जिस दिन बोर्ड मीटिंग होगा उस दिन कंपनी में आता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डायरेक्टर। इसका मतलब वो होल टाइम अवेलेबल नहीं है। ही इज नॉट ए होल टाइम डायरेक्टर, और कंपनी का डे टू डे अफेयर्स में वो इंटरफियर नहीं करता है। वो सिर्फ कंपनी का स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेता है। बड़ा बड़ा डिसीजन लेने के टाइम में वो डायरेक्टर आता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डायरेक्टर। नाम ऑर्डिनरी है, काम बड़ा है। समझ में आ रहा है? बड़ा बड़ा काम के लिए ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स आते हैं। छोटा छोटा काम ये जो फुल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं। बेटा हु इज देन मैनेजिंग डायरेक्टर? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर वो है जिसको कंपनी का आर्टिकल उसको स्पेशल पावर दिया है, तुम कंपनी में सब कुछ करोगे। कौन दिया है पावर उसको? आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वहां पर शेयर होल्डर्स लोग मिलकर
एक आदमी को मैनेजिंग डायरेक्टर किए हैं, मतलब उसके हाथ में कंपनी का सब्सटेंशियल पावर है, जो कंपनी को पूरा चलाएगा। ही इज द बॉस। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का इंटरनल अफेयर्स के लिए बॉस है, एमडी उसको बोलते हैं। सीएमडी भी कहीं कहीं पर बोलते हैं। एक्चुअली सीएमडी टर्म कहां पर नहीं है, कंपनी एक्ट में नहीं है। कंपनी एक्ट में टर्म है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। हम लोग लगा देते हैं सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के हाथ में सब्सटेंशियल पावर होता है कंपनी चलाने के लिए। ठीक है। अभी और एक तरह का डायरेक्टर है जिसको बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? जैसे हमारे यहां पर बहुत सारा नौकर है। एक नौकर 20 साल 25 साल हमारे यहाँ पर रह गया, हम उसको नौकरों का मालिक बना देते हैं। तुम मालिक हो, नौकरों का मालिक। तुम्हारा थोड़ा हैसियत बड़ा हो गया, तुम ये बर्तन बर्तन मांजना छोड़ो, कुछ बड़ा बड़ा काम तुम करो। उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का नाम क्या है? होल टाइम डायरेक्टर। ये एम्प्लॉई है, कंपनी का एम्प्लॉई है। होल टाइम डायरेक्टर नाम का डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन वो क्या है? एम्प्लॉई है, कंपनी से सैलरी लेता है। दिल्ली आएगा, 9:30 को पहुंच मारेगा, 5:30 को जाएगा। ये नौकर बड़ा नौकर है कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बात समझ में आ रहा है क्या? फुल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 9:30 से 5:30 तक कंपनी में काम करता है। ये एम्प्लॉई है, बहुत दिन से काम किया है, हम इसको थोड़ा प्रमोशन करके उसको बोल दिए डायरेक्टर बन गए तुम। कौन सा डायरेक्टर? खाक डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम, या होल टाइम डायरेक्टर। जैसे डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग। अरे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत दिन काम किया है, इसीलिए उसको एक थोड़ा ये दे दिए डायरेक्टर एचआर मार्केटिंग। वो होल टाइम डायरेक्टर है, वो एम्प्लॉई है। तो कंपनी का रियल डायरेक्टर उसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या ऑर्डिनरी डायरेक्टर है, जो सिर्फ बड़ा बड़ा डिसीजन के लिए कंपनी में आता है। ये छोटा मोटा काम के लिए ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर उसको संभालेंगे। बड़ा काम होगा तो ऑर्डिनरी डायरेक्टर आते हैं या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी में आते नहीं है दिल्ली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी में दिल्ली आते हैं। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा पावर किसके पास में है? आम आदमी के पास। हम चाहे तो मोदी को भी हटा सकते हैं। उसी तरह से कंपनी में सबसे ज्यादा पावर ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स या जिसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उनके हाथ में होता है। लेकिन ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स हम लोगों को कोई पूछता नहीं है। उस तरह से कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लोग समझते हैं ये कोई डायरेक्टर है। हमारे लिए डायरेक्टर कौन है? एमडी है। हमारे लिए डायरेक्टर कौन है? होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सबसे ज्यादा रोग दिखाते हैं कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये भिखारी हैं, ये सब नौकर हैं। 9:30 को आते हैं, 5:30 को डायरेक्टर आते हैं, जाते हैं दिल्ली, एक डायरेक्टरशिप दिखाते हैं, लेकिन ये नौकर हैं। उनसे थोड़ा बड़ा है कौन से? मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। वो इन सबका मालिक है। उनका मालिक है। जितना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर में होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन उसके हाथ में भी रियल पावर नहीं है। रियल पावर किसके हाथ में होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको बुलाया जाता है, आप आइए बड़ा डिसीजन लेंगे। छोटा डिसीजन के लिए एमडी, फुल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सब हुए हैं, वो कर लेंगे। बड़ा बड़ा डिसीजन जब होगा तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, बोर्ड मीटिंग होता है, वहां पर बड़ा डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कंपनी का लिया जाता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट हम और डायरेक्टर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।
अभी मैं थोड़ा आपको अनम्यूट करता हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। Sir, can you give one example of a private company where the government is the uh, अरे कल को मोदी को जिस shareholder कंपनी को and खरीदना है majority वो क्या shareholder? करेगा, 51% खरीद लेगा, हो जाएगा वो गवर्नमेंट कंपनी। इंडिया में 11 लाख कंपनी है, जिस कंपनी को खरीदना चाहता है उसका 51% शेयर गवर्नमेंट अगर खरीद ले तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन गया। बात समझ में आ रहा है? कोई भी कंपनी, प्राइवेट हो पब्लिक हो, जिसका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास में है वो हो गया गवर्नमेंट कंपनी। नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसा प्राइवेट कंपनी को खरीदता नहीं है, लेकिन खरीद सकता है। कोई अगर तुम एक ऐसा कंपनी बनाओ जिसमें डिफेंस रिलेटेड कुछ बना रहे हो, गवर्नमेंट देखा ये स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस है कंट्री के लिए, गवर्नमेंट उस प्राइवेट कंपनी में 51% शेयर खरीद लेगा और क्या बन जाएगा, वो प्राइवेट कंपनी रहेगा लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस उसको मिल जाएगा। और किसी का? सर पीएसयू और हाँ, गवर्नमेंट कंपनी होता है ना सर? ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, पीएसयू कंपनी नहीं है, ये कॉरपोरेशन है। ये पार्लियामेंट में एक पास करके हम पीएसयू बनाते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या कॉरपोरेशंस, ये कंपनीज नहीं। थैंक यू सर। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, जो मैक्सिमम 15 ओके। डायरेक्टर हो सकते हैं। हेलो सर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, अच्छा, जो 15 डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो कौन से सेगमेंट में 15 डायरेक्टर हो सकता है? सबको मिला के 15 डायरेक्टर ले सकते हैं? सब डायरेक्टर मिलाकर तो मैक्सिमम ऑर्डिनरी 15, मैक्सिमम 15, 15 से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन उसके तो लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या एग्जीक्यूटिव नॉन मैनेजिंग डायरेक्टर? एग्जीक्यूटिव होल टाइम सब मिलाकर 15, वुमेन सब मिलाकर मैक्सिमम 15। हम्म। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपका नेक्स्ट क्लास सर आएंगे, सर आगे सर। नेक्स्ट क्लास कौन सा है बेटा? मैनेजरल डिजास्टर इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट। हाँ, सर आगे क्या, या नहीं तो मैं किसी को अम, ये करके होस्ट करके चला जाऊंगा। कौन रहेगा नेक्स्ट क्लास तक? कोई एक बोलो, मैं उनको होस्ट कर दूंगा। आलोचना। Hello students. Hello students. Good morning. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Very good morning. Class complete ହେଇଗଲା? 8 to 9 class complete ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? Yes, madam. Yes, madam. Okay, okay. चलो. Wait a moment.
Let's start. Wait a moment. I will set the slide. Okay. Is it visible to you, dear students? Slide is Yes, visible to you? yes, yes. Okay. Chalo, let's start. See, we will discuss the paper disaster management, right? So disaster management, in this paper, we will discuss many things. First, we will discuss what are the causes of disaster, why the disaster happened, and what are the reason and causes of disaster. Apart from this, we will discuss different types of disaster. It's covered many things in the different types of disasters. Apart from this, we will discuss how to manage disaster. So to manage disaster, various agencies are played a major role. Apart from this, a private agency, public sector agencies. Apart from this, the major role played by state centers, right? So the contribution by all the different various agencies, the disaster management, properly disaster management can be possible, right? So these are the things. It is a very, means what? We will discuss the paper. It is very, means it is a kind of different kind of paper. So here we will cover, these are the things we will cover, dear students. So first, we will discuss what is disaster and what are the reason of disaster. I hope कि हमें समझते माने we all knows clearly now what are the different kind of disasters are there. सब जानी चे. Still we will discuss the paper. मैम हमें सब जानी चे. I know we know everything. Still we will discuss the paper disaster management and we will start the concept of disaster. Concept ରୁ ଆମେ start करी. ପିଲାମାନେ କହିଲେ रे what do you mean by disaster? जो माने अच्छो सबू माने अटेंड करूछ क्लास कहलो what do you mean by disaster? Disaster काहे के? What are the reason of disaster? What are the causes of disaster? What do you mean by disaster? Ma'am, disaster means an event that brings harm or destruction to the हाँ, people and the environment. environment, society, people, environment. Very good. ठीक है? See, something is extreme. It leads to disasters. Extreme weather can lead to disaster. Extreme human activity also can lead to disaster. So extreme weather, it leads to, for example, extreme weather. For example of extreme weather lead to disaster like flood, cyclone, drought, avalanches, volcanic eruptions. That leads to variety kind of disaster will happen. Extreme human activity also leads to variety kind of disaster will happen. It leads to what kind of disaster? Like industrial disaster, technological disaster, different kind of pollutions. It leads to global warming. So many things will happen if extreme human activity also will be there. So ultimately, disaster, it leads to destructions. It affects life and property of people. It damages entire environment. Already you said no. It damages entire environment and also it destroys society. It occur all of a sudden. Some disasters, it occur all of a sudden in a fraction of second. And it will destroy and destructive in nature and destroy everything. And some disaster, it will happen, it occur, it will happen and it will last for a long. Like drought. It will slowly happen and it will last for a long.
like earthquake. It will happen all of a sudden and it will destroy everything. So ultimately, disaster, it is basically it leads to threat, danger, and it affects human being, environment. It leads to death, injury, disease, stressful environment. It may be natural disaster or it may be human-made disaster. It is very serious and imbalance the environment and the society. It really disturbs the functioning, the normal functioning of the society and community. ସମସ୍ତେ ଭଲ ସେ ନା ଅଛି, suddenly earthquake ହେଲା, suddenly କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲ cyclone ଆସିଗଲା. So ultimately କଣ ହବ ନା imbalance, to maintain imbalance the functioning of the society and the community. It relates to huge loss of life, obviously, damaged property. It affects the economic condition of the country and the states, and the entire environmental disturbance will be there, right? So if such kind of things will happen, disaster say it, no? We will discuss various kind of disaster and we will discuss step by step. So in this particular area, if such kind of things will happen, so here various, how we will manage it, that we will discuss in this paper. If such kind of things will happen in day-to-day life, then how we have to manage it, how we have to face it. Some disasters are unpredictable in nature. We cannot predict, we cannot assume, but it will happen all of a sudden. But some disasters are unpredictable in nature. We can predict, we can assume. Basing on this, we can take the precautions, we can take the steps. So what are the causes? What are the effects? What are the solutions? That we will discuss in this paper, students. And here, ultimately, the awareness of the society, awareness of the people, and the helping hand by the private and public sector organization towards the people and the society, the disaster can be managed and disaster can be maintained. So this is what the disaster, anything extreme, that leads to disaster. Ultimately, if we can define what do you mean by disaster? A disaster is a sudden event that causes large scale of damage. Already I told you, no? It causes large scale of damage like life. It means it will affect the life of the people. It will affect the infrastructure, property. It will damage the social aspect and the society and nation as a whole. So ultimately here, individual person, suppose if some kind of disaster will happen, the individual will not suffer. The whole society will suffer. Right? It is jane suffer karibani. It kiye suffer kariba? Whole society, whole state, nations, samaste iti suffer karibe. So this is what disaster. So ultimately, it is destructive in nature. Jota ki amar war asla, that was the man-made disaster, just eina jota amar ame face kariche. So ultimately, it was destructive in nature. Man-made disaster. Right? So here, we will discuss, dear students, different types of disasters are there. The disaster, it is broadly classified into various types. Ultimately, the types of disaster, it is broadly classified into two ways. One is natural disaster, and second one we will discuss the man-made disaster. Natural disaster, again, sub-classified into various factors. What it includes? It relates to, first one is the land movement or terrestrial disaster. It including avalanches, earthquake, landslides,
and volcanic eruptions. Here, what do you mean by avalanches? What do you mean by earthquake, landslide, volcanic eruptions? What do you mean by these? What are the reason and causes? What are the effects? And what are the solutions? We will discuss one by one chapter. Ultimately, avalanches, it generally happened in a snowy hills, snow mountains, and avalanches, and landslide, it happened in a mountains. The snow mountain rahabo, eta mountain rahabo. Ultimately, eta hill rahabo, eta hill. But ultimately, it landslide and avalanches, it happened in a snowy hill and it is happened in a mountains. So we will discuss the reason, causes, and effect solutions we will discuss. Apart from this, we will discuss something related to aquatic and water-related disasters. It relates to flood, tsunami, and tidal waves. It relates to the water and aquatic disaster. That we will discuss the causes, effects, solutions. We will discuss one by one chapter. Then we will discuss weather and atmospheric disasters, right? It relates to blizzards. Now, blizzard, what do you mean by blizzard, students? Blizzard means basically it is a heavy icefall. Generally, it will happen in a heavy icefall. It is we can say with huge winds, high winds. It's a icefall habo, jota ki high winds saito, and it is the severe kind of things will happen. Jota ki hame blizzards kuha jauchi, it is a kind of natural disasters. Apart from this cyclonic storm, we will discuss one chapter. What are the why the cyclone create, where the cyclone create, and what is the causes of cyclone. So that we will discuss. Apart from this, we will discuss drought, sukha padijiba pura chariade. What is the reason, causes, effects, that we will discuss. We will discuss hailstorms. Hailstorms, basically, we can say, what do you mean by hailstorms? Eta hame chapter discussion karibani. We will cover the major area, major chapter rakam discussion kariba. Hailstorms, basically, it is a kind of icefall. Eta madhya gota kind of icefall where it will generally kon habo na the icefall will be there like a rain. Jemti borsa poduchi, say type icefall habo, and the ice are very hard in nature, right? A small, hard, small means basically like a ball, small, hard balls, right? So like this, the ice fall like a rain, and it will be there in a different area that we can call as a hailstorms. It is a natural disaster. Tornadoes. Now, tornado means what? It is a kind of, basically, ami kahiba kono na rotating air, but it is very violent in nature. It is a violently rotating air. Move korthibo, gol buluthibo, jota ki ame chua bele kohuthile khandiya bhuto, right? So this is what the tornadoes. Thunderstorm, we know that, and lightning, jota ki generally hue at the time of rain, before rain, na? Jota ki na basically eta ame dekhibaku pauche at the time of summer season. Jota ki ame kohuche kono na jo kala boisakhi asila. So at that time, thunderstorm, lightning, rain, all those things combinedly happened, right? And heat wave and cold wave. Generally, heat wave, it happened in a summer season, and cold wave, it happened in a winter season. What is the reason of heat wave and what is the reason of cold wave? Jota ki hame na day-to-day life jo face korche heat wave ko, right? Severe heat wave. Apart from this, biological disaster, it is also included in a natural disaster, epidemic and famine. Now, what do you mean by epidemic? What do you mean by famine? We will discuss. So this is all about the natural disaster. Natural disasters, it is unpredictable on some disasters. See, some disasters are unpredictable in nature. Some disasters we can predict. Unpredictable in nature, that we can call as a earthquake, volcanic eruption, right? Unpredictable in nature, that we can call the avalanches,
Landslide. Sometimes landslide also predictable in nature, but predictable in nature, that is flood, cyclones, drought, it is predictable in nature. Ultimately, natural disaster, it is uncontrollable in nature. We cannot control it. We cannot stop it. Karipariba ko stop. Ame cyclone ko stop karipariba. Earthquake ko stop karipariba. No, never. We cannot stop it. We cannot control it. But we can take precautions. We can take some major precautions so that we can face it. We can maintain it. Right? Ame ako किछिटा स्टेप नबा जोथरे कि हमें फेस करि परिबा बट हमें को स्टॉप करि परिबा इट इज नॉट इन आवर हैंड राइट इट विल हैपन दैट्स व्हाई इट इज नेचर इट इज देयर इन द नेचर हमें नेचर को हिट करिबा नेचर हमको हिट करिबा हमें केमते नेचर को हिट करछे दैट वी विल डिस्कस इन दिस पेपर राइट apart from this natural disaster we see dear students all the natural disaster one by one we will discuss one chapter. Right now, we will discuss first. We will start earthquake. Earthquake we start kariba, right? What are the causes, effects, reasons, solutions? Everything we will discuss, right? Then, apart from these, some another type of disasters. It is there. It is man-made disaster. Now, man-made disaster it having various factors that created by man. It is controllable in nature. It is in our hand. Still, the disaster is there. It am hattare ochi ame control kari pariba. Right? But disaster what ta am hattare ochi ame control kari pariba. Still war hochi. Right? So here the man-made disasters it includes industrial disaster, chemical disaster, industrial disaster. Disasters it happened in different factories, mines, right? It is called of industrial disaster. Chemical disasters, suppose we can take the great example of chemical disaster. It happened in the chemical disaster. It happened in the Bhopal tragedy. Somehow we know about the Bhopal tragedy and it happened, how much it is destructive in nature, right? We know that. It is a kind of chemical disaster. Technological disaster. Technological disaster means what? It leads to basically what? The destruction of the building, bridge. So that is the basically we can say as a technological disaster. We will use technology and we are doing something, but still the disaster will be there. Recently, हमरा एजी एटी कटक रे कोन हला से क्रेन गोटे उठौतला सेटू कोन हला फ्लाईओवर होतला क्रेन उठौतला सेटा पूरा पड़ी गला सेटू कोन हला बहुत सारा लोकंकर injured death many things happened. That is a technological disaster. Nuclear disasters are there, oil spills disasters are there, building fire, coal fire, dam failure, war, right? Apart from this terrorist attack, apart from this biological disaster also, see, biological disaster will be there in a natural disaster as well as the man-made disaster. If it is created by biological disaster, if it creates by nature, that relates to natural disaster. If it created by man, that we can call as a man-made disaster. Suppose we can take the example of biological disaster, it relates to nature as well as the man-made. Suppose Corona. If really that created by nature, then Corona was a natural disaster. If really that created by China, then Corona was a man-made disaster. ଆମେ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିନେ, ରାଇଟ୍? whether ସେଟା ନେଚର ରୁ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ କଣ ବର୍ଡ ରୁ ହେଇଥିଲା କି ରିଅଲି କରୋନା ତାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲା, ସରି ଚାଇନା ତାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲା, ଆମେ କୌଣସି କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇନେ. But it is a kind of epidemic, right? It suffered all of the world. So ଯଦି ସେଟା ନେଚର ରୁ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା natural, ଯଦି ସେଟା man-made ରୁ ହେଲା that can be a man-made disaster. Apart from this, transportation, basically transportation accident or transport, we can say the kind of disasters. Accidents, by road, by air, by water, no?
variety kind of disaster is there. Apart from this crime, what do you mean by crime? How many types of crime? What are the reasons of crime? That we will discuss. And also we will discuss the man-made disaster. It is a major area in this paper. It is a pollutions. Variety kind of pollution. It is there in your syllabus, right? Variety kind of pollutions are there. And it is purely man-made. And it leads to global warming. What do you mean by global warming also? So dear students, these are the types of man-made disasters. As already I told you, it is predictable, it is controllable in nature. Ako ame predict bhi kari pariba, au control bhi kari pariba. It is in our hand. We have to take the proper step so that we can manage it. Bujhigala ke pila mane, got it? Is it clear to you? Students, concept and types, is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପେପର ନେଇଛ କିରେ ପିଲାମାନେ ନ ନେଇଥିଲେ ବି କ୍ଲାସ କରିପାରିବ ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁସ୍ ନୁହଁ Ma'am, ନେଇଛୁ. ନେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା Yes, ma'am. ଭଲ ପେପରଟା ହଁ ରାଇଟ୍ so in the present environment right ଆଜିକା ଡେଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପେପରଟା ସମସ୍ତେ ପଢିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ଏରିଆରେ स्कूल टू नहीं कि पूरा हायर स्टडीज पर्यंत सब एरिया रे डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर इंट्रोड्यूस करा गला काहे कहले ना पेपरटा समस्त जानिले हम डिजास्टर को फेस करबा वी शुड नो व्हाट आर द कॉजेस व्हाट आर द रीजंस व्हाट आर द सॉल्यूशंस व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू टेक व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस हां जेटा कि हमें फेस करबा हम नेक्स्ट जनरेशन समस्त ताको प्रॉब्लम फेस करबे सो इट इज समस्त इफ all the society all the person all the people they aware about this they're aware about this and they should know this paper properly, clearly, so that we can face it. ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ right so this is the general concept we have completed dear students what do you mean by disaster you have to remember and what are the different types of disaster it is ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମନେ ପଡିଲାନି it is divided into various part and various way taku chalibo you can remember natural disaster as well as man-made disaster jemti natural disaster again subclassified into various factors jodi mane pallani then you can remember different types of natural disaster jota ki ame janiche right and first in the natural disaster first chapter we will discuss konre earthquake ru ame start kare hela dekho you can see this slide here how much it is destructive in nature कितने परिमाण रे ये भयानक earthquake it is unpredictable uncontrollable in nature there is no technology development of we in the 21st century we are there in a technological era right new technology advancement technology are there in the created by scientists and it is there in this society no but in terms of earthquake there is no technology development is there to identify where and when the earthquake will happen आज पर्यंत आ पाई आकु मापिबा पाई जानिबा पाई कोनोसी प्रकार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है नहीं right when it will happen where it will happen and basically it is that much of destructive in nature it will happen in a fraction of second right 1 to 2 seconds or 3 seconds maximum no it will happen in a fraction of second and it will destroy everything and the after effect it is very terrible in nature बहुत भयानक थिबा जोटा कि आमे time to time it happened in a different countries right like Myanmar in a recently Myanmar rehitila and Myanmar is a basically we can say it is a earthquake prone area सेठी हुए सब बले काहे कि हुए ता reasons अछि right so just हम recent past रे हमें देखि छ Myanmar केते भयानक earthquake face करिछि right
So it is earthquake, it is such kind of natural disaster, right? So chalo pila mane dekho, you can see this slide here. A slide re gote picture dekhucho, right? What it relates to, what it relates to, what the picture relates to. You can see here one focus point is there and one epicenter factor is there. What do you mean by focus point and what do you mean by epicenter? This is the process of earthquake, right? See, in this area, the origin point of the earthquake inside the earth, that we can call as a focus point or seismic point, dear students. Joti inside of the earth, in a particular area, in a particular place, while the things will happen inside the earth, that we can call as a focus point or seismic point. And that focus point and seismic point, we can say the series of seismic wave, bahu parimanare, the series of seismic wave, it will move inside the earth surface, and the effect will happen in the top of the earth surface, outside the earth surface, right? That area we can call as a epicenter. Origin point that is there in the inside the earth surface, due to the series of the wave moving inside the earth, that is a seismic wave, and it will affect in the outer part of the earth surface, right? That particular part, एमती तो नहीं कि चारियाडे ये करिबो, हमर आइडेंटिफाई करो छि सेही जगह रे सेही एरिया रे सेही हिट करिछि, right? So it is directly affecting the outer part of the earth surface. Origin point in inside of the earth and outer, it will affect outer part of the earth surface. That we can call as a epicenter, right? So focus point and epicenter. Generally, most of the earthquake, it happened and it originate the depth of the 50 to 100 and more than 100 kilometer, 200, 300, no, 500, more than 100 kilometer, 50, it starts from 50 kilometers to more than 100 kilometers inside the earth surface. That we can call as a focus point. जो focus point ता तोलू केते 200-300 किलोमीटर तोलू जो क्रिएट होउची, सेही जो पॉइंट रो सेटा सेही भितरु हमर क्रिएट होउची, एंड आर इफेक्ट देखौची कोठी ना अर्थ सरफेस रे, राइट? जोटा को हमें कहिले एपिसेंटर. And here, to identify the magnitude level of the wave, what kind of destruction is there? Generally, हमें कहिबा को परिमाण रे earthquake ता हेची, ता तो different layers are there, different levels are there, that I will tell you, right? That to know the magnitude level of the wave, it recorded and it identified in the Richter scales. हमें जानी चाहिए Richter scale एतिक हैला, Richter scale सही Richter scale रे हेची, right? So it will identified in the Richter scale. Generally, the Richter scale, it is based on the 1 to 10. Richter scale ta हमर केते रे अछि रे पिला माने starting from 1 to 10. And it is again divided into 5 level. 5टा layer रे 5टा level रे divide करा जाइछि. जेमति कि if 1 to 2 Richter scales, it is very low damage in nature and it is always there inside the earth. It is always moving inside the earth. जोटा कि हमें feel करिबानी, we cannot feel it, right? 1 to 2 generally, it is generally 1 point to 2 point सब generally हम inside the earth रे moving करता है, right? Seismic wave जोटा हमें कहिले ही ना, right? So we cannot feel it, and it is very low destructive and density in nature जोटा कि हमें कहिबा. While 2 to 5 Richter scale is there, it is also low damage. हमर एइना जस्ट हमें कहिबा लास्ट मंथ रे हमें कहि परिबा हमर एठी ओडिसा रे भुवनेश्वर रे हमको फील हेतला सखालु सखालु, राइट?
मॉर्निंग ग्रुप रे सकाळु सकाळु फील हेतिला 3 पॉइंट समथिंग केते थिला ना 3 पॉइंट समथिंग केते थिला राइट सो मु भाबली स्वप्न देखुची माने पूरा पूरा माने इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सेकिंग द अर्थ सरफेस पूरा सेक कला सो जोटे कि हमें कहबा 2 to 5 इट इज आल्सो लो डैमेज इन नेचर बेसी डैमेज करिवनी दैट इज द सेकंड लेयर ऑफ द रिक्टर स्केल यदि हमें थर्ड स्टेप को जीवा थर्ड लेवल रे it is 5 to 6 Richter scale that we can call as a moderate level. Definitely, ଆମେ ଏଠି feel କରିବା କଣ କରିବା ନା things will ଆମର ଘରର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଇଏ କରିବ ଭାଇବ୍ରେଟ ହବ ହଁ ଜିନିଷ ଆଗ ସବୁ ପଡିଯିବ ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାର ଦେଖେଇବ ବହୁତ ଜୋରସେ right that is the moderate level. Then after 6 to 7 Richter scale that it is high in nature पिला माने एठी हमें कहिबा it is high it is the basically here the destruction will be there the damage will be there and we will face lots of problem in this particular area 6 to 7 right and more than 7 to specifically we can say more than 7 it is very damage and very destructive in nature right more than 7 जदि हमें कहिबा एटा कोन हबो हमर हाई आसी गला तापर it is very high in nature very high damage we can say if it is there in the more than 7 आ जदि 9 हे गला से किछि रहिबनी 7 to हमें जदि कहिबा up to 9 it is very high destructive in nature तमें एग्जांपल नबा कोठी एमति कोन हेइथिला एटा जस्ट मोइन एग्जांपल रे कहिबी very high destructive in nature 7 to 9 कहिबा आ जदि 9 हे गला पिला माने बस आ किछि दरकार नै कहिबा तमे केते निजको प्रोटेक्ट करो केते टेबल तळे पसब ये तळे रुह बाहर को जहा करूच करो एटा सब कोलैप्स कर दबो सब किछि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग इट विल बी कोलैप्स्ड पूरा पूरा ध्वंस आ किछि रहिबन हैला जदि हम एक एग्जांपल नबा पिला माने जदि कोठी एमती टाइप हमर जनरली अर्थक्वेक हेछि आजि पर्यंत जापान रही जी जापान कोठी रे बाबू जापान रही जापान रियल मैं जस्ट कहिबा को जाउथली हैला जापान 2011 it was happened in जापान रो कोठी हितला ओशन रे it was happened in the Japan ocean right and for it leads to tsunami जोटा कि tsunami आस्तिला रिक्टर स्केल केते थिला 9 पॉइंट right 9 पॉइंट रे जापान रे हितला जापान रो ओशन रे मध्य हितला सी रे मध्य हितला जोथि पाई कहि कि आस्तिला कोन ना पूरा tsunami आस्तिला हमें समस्त देखिचे 2011 रे जापान tsunami right कोन डिस्ट्रक्शन हेतिला we know that जदि हमें कहबा इन इंडिया आमो इंडिया रे मैम केबे एमती हेछि कि डिस्ट्रक्शन यस हमें जदि रिसेंट डिस्ट्रक्शन कहबा इन आर इंडिया इट वाज हैपेंड एट द ईयर ऑफ 2001 26 जनवरी 2001 26 जनवरी थिला जनरली सब पिला माने मॉर्निंग रे जाउथिले स्कूल को परेड करिबा को सब किछि एक्टिविटी स्टार्ट होउथिला इट वाज हैपेंड इन अ वेरी अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग रे स्टार्ट हेतिला गुजरात it was there in the Gujarat Bhuj area Gujarat state ro Bhuj area re heitila and magnitude level was 7.7 right jetele Richter scale ra ko identify kara gala aro ye thila kona na 7.7 jothire ki it was killed more than 20,000 people and destroy the entire infrastructure, destroy everything, destroy the environment, infrastructure, and more than 20,000 people killed at that particular time. Right? In our country, in India, we faced a huge destruction related to earthquake. Jodi ame kahiba, right? Eina last year, Turkey re heithila, ame dekhiche, 7.8 Richter scale, Turkey se aji bhuli gala. At that time, while Turkey faced a kind of destruction, highly suffered Turkey due to the earthquake.
And the Richter scale was 7.8 magnitude level, and the destruction of the Turkey, we know that को rate रे समानकर destroy ହେଇଥିଲା सेई टाइम रे इंडिया एते जे ह्यूजली सपोर्ट करिथिला फाइनेंशियली, मोराली फाइनेंशियली आमे तांको सपोर्ट करथिले, मेडिसिन बहुत सारा जिंस आमे सपोर्ट करथिले, इंडिया सपोर्ट करथिला, बट एइना सी पूरा पलटी गला टर्की, राइट? सो अल्टीमेटली these are some examples of natural means earthquake. It was happened. गोटे थर आमर महाराष्ट्र रे हेतिला 3.4 रे एतटा ये रही नथिला, आमर एठी हेतिला लास्ट ए दिस मंथ आमे मो कहूतिली जोटा 3 पॉइंट समथिंग हेतिला, जोटा कि डिस्ट्रक्शन नाही एस एटा छोटे छोटे आगो जोटा कि डिस्ट्रक्शन हबनी, बट डिस्ट्रक्शन आसीबो कोठू जोटी मोर देन 7 हे गला, एंड 9 इट इज कोलैप्स, सबु ध्वंस कोलैप्स हे जिवो. And जदि आमे कहिबा म्यांमार एइना जस्ट म्यांमार रही छे बिफोर 1 week 1 month हबो, right? Myanmar, it was an earthquake prone area. Myanmar itself, it was an earthquake prone area. It is an earthquake prone area. सेठी हबो काहेकि ना always it was there, hit by the Eurasian plate to Indian plate. तांकर जो प्लेट अछि सेटा को प्राय टाइम रे हिट करे म्यांमार रे जाई, राइट? सो सेठी पई से गोटे earthquake prone area. So dear students, here who identified this earthquake? The earthquake को की identify करूची? The earthquake identified by the scientist. We can call the who identified earthquake, right? And we can call as a seismologist. जो माने जो साइंटिस्ट ए earthquake को आइडेंटिफाई करूचंती, ताको रिसर्च करचंती, तापर एनालिसिस करचंती, ताको आमे कहबा seismologist. Because they identified this seismic wave, जोटा कि तळ inside हम already discussion कले, seismic point और focus point, जो तळ inside रो factor को कोन कहा जाय? Seismic point और focus point. They identified the seismic wave, the moment of the seismic wave, the continuous moving of the seismic wave. That's why that the scientist we can call as a seismologist, right? And they can identify the seismograph and seismic graph, जो अच्छी seismic graph through रो से माने को आइडेंटिफाई करंती. हैला बुझी गलो पिला माने कांसेप्ट? कांसेप्ट बुझी लगी earthquake रो पिला माने? अरे Yes, ma'am. ये कुआडे मु डेफिनेशन ता लिखिथिली, बट एडी कुआडे पळेला देखा जाउनी, माने मु सेमटी आनथिली देखा जाउतला, बट स्लाइड रे देखा जाउनी डेफिनेशन ता पिला माने. मैम तो बेसी जूम हे होउची बेसी आ को प्लस ये कले होउनी कोन एमती माने ये अछि आ ताको मु छोटो करबा को चाहूची, बट से होउनी रे बाबा. मु ट्राई करची छोटो करबा को, बट से होउनी छोटो, सेतिक रे ही एई जूम रे ही रहउची. थोड़ा ऑन शेयर करी आउ थोड़ा शेयर कर नाइ अनशेयर कली कि शेयर कले मध्ये एई ये रे ही रहउची बोधे. एटा जो माने हमर जो ये करा जाईची कोन कहिला जूम ता से जूम थ्रू रो एटा कनेक्ट हेची मु भाबुची जा. एनीवे मु परे देखि देबी किंतु होउनी, मु ट्राई कर सालेनी. मैम जा अछि किंतु एटा आपण पीडीएफ टा की करी गटा पठे नाइ देले नाइ 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 मते कहंतु आपण को इना जूम अछि, बट आपण मानु को इना देखा जाउची ना देखा जाउनी? देखा जाउ जेंती एबे देखन लेखा छि प्रिकॉशन लेखा छि पी कटी छि सेंती कि जिंस कटी जो पर इफेक्ट. हाँ 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 राइट 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 राइट. कौन करिवा एथरो देखा गला देखिलो? यस मैम परफेक्ट. हैला आरो डेफिनेशन ता देखा जाउनी, बट मु एठी कहि दउची. हैला व्हाट डू यू मीन बाय earthquake? जदि हम एठी सिंपल ये डिस्कशन करिबा, earthquake माने कोन नै? earthquake means एटी ऊपर डेफिनेशन ता देखा जाउनी जोटा मु सेटा को कहि दउची. The movement of tectonic plates, dear students. Earthquake will happen in a various causes. Various reasons are there to happen the earthquake. We will discuss in the causes of earthquake. देखो लिखा है causes of earthquake. It related to tectonic plate, volcanic eruption, mining, underground atomic test, construction of dam. ये सब अच्छी. But the major causes of earthquake, it happened due to the movement of the tectonic plate, causing the vibration of the earth surface. जेतेले tectonic plate ता movement करे
inside the earth surface, Indian plate to Eurasian plate. Amo plate hala Indian, other plate hala Eurasians. So Indian plate to Eurasian plate bhitere jetele takkar hue, heat hue, right? It create vibration. Already I'm a discussion called magnitude level and level of different magnitude level and Richter scales, right? 1 to 10. So due to these things, it create vibration on the earth surface. And these vibrations we can call as a earthquake. এই যে vibration को हमें कौन कहूचे earthquake बोली कहूचे. Already I told you it is unpredictable in nature. We cannot predict it where and when it will happen. It is very violent in nature. It is very destructive in nature. It is a kind of means it is a big kind of natural disasters. कारण अन्य को तो हम आइडेंटिफाई करि परिबा जानि परिबा बुझी परिबा से अनुसार हम प्रिकॉशनल स्टेप नबा बट एटा हम किछि करि परिबानी. There is no technological advancement is there, and after effect of this kind of earthquake it is very terrible and miserable in nature. ସେତେବେଳେ ତ ହେଇଯିବ. It will happen in a fraction of 1 or 2 seconds. Then after effect it is very terrible and miserable in nature. Kahinki very terrible and miserable life ହେଇଯିବ madam? Because in these cases specifically, if it will happen more than 7, then we can face lots of problem, like we will lose life, we will lose property, घर नथिबो, family रे जणे थिबे आउ अधा जण नथिबे, चारिआडे means what the kind of काହାର कोन affect ହେଇथिबो, it is basically on means we cannot imagine, right? It will disturb the water supply, pani paibani, disturb the electricity, nathibo, disturb the communication, disturb the transport, disturb the food, disturb the everything disturb. That's why it is highly destructive in nature, right? एठी कौन हबो? Generally, तमे जदि म्यांमार को analysis करिबो, म्यांमार रे काहे की continuously why it is a earthquake prone area ना तारो जो यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से तो धक्का हुए तारो से गुटे बड्ड गुटे ग्रेट क्रैक्स अछि म्यांमार रे. जो क्रैक अगेन एंड अगेन जोटा कि टीवी रे न्यूज़ रे देखौथुला, जो क्रैक अगेन एंड अगेन तारो से फैक्टर को से ये को इफेक्ट करूछि. So it is basically earthquake through continuous kind of things will happen. It opening a great cracks on the ground and earth surface. Due to this, it will collapse buildings, infrastructure, everything. Death खाली करिवनी, building collapse करिवो, infrastructure करिवो, जिते सबु हमर facility को destroy कर दबो. Right? It will, apart from this पिला माने, it will destroy the entire economic condition of the state and country. केते जे तळु को पळेबो economic condition कारण पुणी हम ताको reconstruct करिबा पड़िबो. पुणी आमे समान को facility दबा को पड़िबो. पुणी आमे से state को सेमति हमको बनेबा को पड़िबो. Right? So सेथि पई एटा तो government without government support हबनी कारण itself हम पाखरे किछि नथिबो. So सेठी economic condition एते तळु को पळेबो country रो, you cannot imagine that. Right? And here पिला माने गोटे सेकंड होल्ड करो, गोटे सेकंड, 1 सेकंड, गोटे
चलो ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ तो ଏଠୁ କଣ ହେଲା see in this particular area earthquake it is basically while the earthquake will happen it leads to means the secondary it is a primary destruction right earthquake will happen it is a primary destruction and it the causes of earthquake it will create a series of secondary hazards ता माने कोन मैडम see earthquake जेतेबेले हबो सेटा त हमर primary destruction हबो ही हबो but if the earthquake will happen in a general normal or surface habo that it leads to earthquake but if the earthquake will happen in a ocean it leads to tsunami if the earthquake will happen in a snow mountain it leads to avalanches if the earthquake will happen in a mountain it leads to landslide means these are the sums it leads to some secondary effect right eta kon karibo earthquake ta jo area re habo se sei type ro kon karibo situation create karibo normal surface it leads to earthquake we know that and if it will happen in a such kind of area and sometimes leads to earthquake it happened a volcanic eruption also so volcanic eruption landslide avalanches tsunami it is the another major reason of earthquake ए सबु हला गोटे गोटे earthquake रो major reason and major area जोठी से हबो से टाइप रो सिचुएशन क्रिएट करिवो पिला मन right so causes of earthquake dear students already I told you many things related to earthquake causes see the major and the main cause of earthquake जति हमें कहिबा it normally happened due to generally it happened due to the movement of the tectonic plate already I told you the seismic the series of the seismic wave and seismic the focus point na basing on these the heat of the Eurasian plate to Indian plate amar jo Indian plate is Eurasian plate se jetele move kari ki heat kariba so in that particular area the earthquake can be happened and it depends the destruction is depends on the magnitude level ko magnitude level eta ye heichi sera tar destruction ta depend करे tar magnitude level upare right but apart from the movement of the tectonic plate the movement of this factor this is the primary reason of earthquake right also the secondary causes are also there right the secondary causes due to the volcanic eruption also earthquake can be happen jodi volcanic eruption madhya hela see all the natural disasters are interrelated and interdependent to each other samoste samastanga sete relate karuchandi gotiye jodi effect kala se au gote prakara se ye karibo create habo right jodi tame gote natural disaster se au chatta natural disaster nei ki asibo right so due to the volcanic eruption also earthquake can be happen and sometimes due to the activity of the human activity due to the mining activity right jetebele ati toloku bohu deep layer ku jetebele mining activity hobo if we will hit the inside of the earth surface like anything then definitely se kon karibo she taro different ye dekhebo so due to the mining activity it is a human kind of activity due to the heat of the inside of the earth surface so also leads to earthquake due to the underground atomic test jetebele hobo right so eita madhya amar inside of earth re se tara gote violent create kare right so basing on this also earthquake the reason of the earthquake it also can be happen and due to the construction of dam also due to the suppose we can say the bomb blast in the inside of the earth surface inside of the earth surface re jodi bomb blast bhi kara jaye tahale madhya se hit karibo kahaku tectonic plate ko
seismic wave को. So due to some human activity, due to some basically we can say the contribution, great contribution, या को कहिबा worst contribution of human towards the nature, right? Mining, underground atomic test, big dam, construction of big dam, such kind of things, and we can say the bomb blast inside of the earth. So due to this reason also the earthquake it can be happened, right? So these are the causes, but the natural cause and the most important and the primary cause is the movement of the tectonic plate, right? तो चलो नेक्स्ट है कौन पिला माने इफेक्ट्स. एटा तो हमें जानी छे इफेक्ट कौन होबो वी नो दैट ऑलरेडी मु आ ऊपर हमें बहुत किछ डिस्कशन कर लेनी हैला. इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, effect of an earthquake, it will affect everything. Already I told you many things related to effects. It will affect means it will kill many people. Already I told you the examples of Turkey, Myanmar, and India in the last decades. No. So here, see, it kill people, it kill pets, it kill animals. खाली कोन लोक ही मरिबे सितरे pets animals मध्य मरिबे. So it will die, it will kill people's pets, animals. It is a huge kind of losses towards the society. Apart from this, it will affect the economic condition of the state and country. Already I told you. कितने जे हमें तळु को पळेबा economic conditions रे, you can't imagine that. सबू destroy पुणी reconstruct करके लोक मान को रखिबा को पड़िबो जत्ती की लोक थिबे, right? So it will heavy losses of the state and country, the financial condition, the economic crisis of the country, right? Because due to the damage of the infrastructure, due to the damage of the buildings, due to the collapse of the basically we can say bridge. Apart from this road, electricity, everything destruction is there. That's why the heavy losses and huge losses of the country and as well as state will be there. Apart from these, earthquake leads to fire. Earthquake कहाँ को lead करके आसे पिला माने ना fire नहीं के आसे. कहीं कि मैडम earthquake सहित how it is related to fire? जेतेबेले ब्लास्ट हबो जेतेबेले वाइब्रेशंस हबो हाईली डिस्ट्रक्शन हबो सेतेबेले हमर इलेक्ट्रिसिटी तो चारिया देखिबो. सो ड्यू टू दिस रीजन जोटा के शॉर्ट सर्किट है कि बहु परिमाण रे फायर मध्य हेई पारे जोटा कि हम आगु जाई गोटे एग्जांपल रे गोटे पढिबा मध्य हैला. न्यूक्लियर ये रे केमिति अर्थक्वेक थ्रू रु केमिति फायर हेतिला सेटा गोटे हम केस स्टडी पढिबा से हैला. केमिति बिग डिस्ट्रक्शन एबे पर्यंत सेटा हेई आसुची. That leads to fire also. It leads to tsunami. Already I told you, right? It effect, after effect is the basically, it leads to tsunami. It leads to volcanic eruption. It leads to landslide. It leads to fire. It leads to heavy economic losses of economic. It will destruction of the economic condition of the country, and it lost the entire things of the society. This is the effect. Now, how we will take the precautions? आरो किछि तो precautions generally नाही. Still, कहा जाउची कि जदि हमें एठी हमर तो एठी सब किछि हमें loss face करिबा if it is more than 7. Still, if in these cases, if such kind of things will happen, सुनो एटा जानिबा भाबिबा पूर्व एटा हेई जाय. Generally earthquake का हुए early morning रे late night रे समस्त सोईथिबे देखिबो most of the earthquake it will happen in early morning or late night. सब सोईबा ये रे तम जदि alert थिबो ताहाले तुम क्विकली मूव करबे. क्विकली केते मूव करबे एटा कोन 10 घंटा पर्यंत होउची कि it will happen in a fraction of second. तमे गोटे भाबिबो कोन हैला किछि गोटे होउची कि कहि कि भाबिबा पूर्वरु से ऑलरेडी हे जाइथिबो. नहल तो समस्त माने बंची जाइथाते समस्त बंची जाइथाते. So it is generally still we can take some precautions.
in case such kind of things will happen, what kind of precautions we will take if you are at home or if you are in the outside. जदि घर भितर थिबो केमती प्रिकॉशन नबो, जदि आउटसाइड थिबो केमती प्रिकॉशन. पिला माने केमती प्रिकॉशन नबो, देखो घर भितर अछि 7 पॉइंट रे आको एकला कोन करिवो पिला माने केमती प्रिकॉशन नबो, निजु को केमती बंचेबो, फैमिली को केमती प्रोटेक्ट करिवो. घर भितर बाहर पळै आसबो. फास्ट हैला प्रथम हैला घर दौड़ी के बाहर पळैबो. देखो एटा दीटा जिंस जेतले लाइटनिंग हबो, हाँ जेतले थंडरस्टॉर्म हबो, देखो नेचर रे केमती गुटे माने माने डिफरेंट फैक्टर अछि. लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हबो सेते बेला कोन कहूची घर भितर रु एई पर दिन लाइटनिंग रे अराउंड 8 रु 10 जन लोक जा न्यूज रे कहउतला लोक मानक डेथ हे जाइछ. अटकैक रे कोठी जिवो, दौड़ी के बाहर को जिवो. फास्ट रे दौड़ी बाहर पळेबो. अच्छा दौड़ी के बाहर को जाई पारलन तबे कोन करियो. फास्ट रे तला रनिंग, यू हैव टू रन आउटसाइड दी बेसिकली इन ए प्लेन एरिया. अब भुवनेश्वर तो प्लेन एरिया कोठी किछि नै ना, चारियाडे बिल्डिंग ये रहिबो. हां बाहर को दौड़ी की जीवो. जत्ते बेले बाहर को दौड़ी की जीवो, then while you will go to the outside, you have to take this step and you have to protect first yourself as well as your family. कल निजे को प्रोटेक्ट करिवनी, फैमिली को मध्ये प्रोटेक्ट करिवो. And first you have to run away. हां कोन तो वेरी नॉन गुड. टेबल तळे कोणासे गोटे टेबल हाँ। की किछु गोटे जिंस रहबो ता तळे को माने हाँ लुचि जीव. इन जोटा कि टेबल हैला को टेबल कहले आपनकर ये टेबल काठ काठ स्ट्रांग टेबल लुहा टेबल की खट हबो सेई टाइप. हाँ काचर टेबल तले पसि जिबेनी हैला. काच जोटा कि हमर डाइनिंग आगो जनरली आजिकली सब प्राय जिंस हमें कोन करछे ग्लास रे करथौचे. हां सेई तले हमर सेटा स्पेस थाउचे डाइनिंग तलेटा सेई तले पसि जिबेनी, पूरा आउरी हाईली इफेक्ट हेबे. जनरली एक होची कोन कहूची कहले जोटा कि आपण बढ़िया कहले तो वुड थिंग्स जोटा कि काठ रिलेटेड जिंस ता तले पूरा पसि जिबा. तो एटलीस्ट कोन करिवो कहले जो हीट ता हबो ऊपर आडू somehow हमको प्रोटेक्ट कर दबो, ये करी के रखिबो. जत्ते भी हमको प्रेशर आथिले से प्रोटेक्ट करिवो जनरली कहा जाउछ हैला. सो एठी बढ़ा आपण माने कहले हमें जानिचे. So while you will be there in a inside of your home, you cannot go to the outside. जदि आपण जाई पारु नांती, हां जत्ते बेले जाउचंती, it is the guideline you have to follow while you will go to the runaway towards the outside and you will go to the outside. So it is most important thing you have to use staircase instead of lift. धर हम फ्लैट माने करे 4th फ्लोर 3rd फ्लोर रे रहउचे. हां सो सेठी कोन होची समस्त जनरली लिफ्ट यूज करछे. से टाइम रे कोन हबो लिफ्ट भी रही जाइथिबो, ता भितरे सब चापी हे जाइथिबा हैला. So सेही टाइम रे जम्मा लिफ्ट यूज करिबेनी, you have to use staircases. It is very important and vital for people, right? And if we cannot go to the outside, we are there in the home, inside the home, then we have to protect ourselves as well as our family. हमको हम फैमिली को प्रोटेक्ट करिबा केमती प्रोटेक्ट करिबा ना, below the bed जो हमर बेड खट अछि or any kind of wooden things it is there inside the home, furnitures. वुडन फर्निचर, स्पेसिफिकली वुडन फर्निचर एटी कह जाउ किछि नो ग्लास वगैरह किछि सब को अवॉइड करिवे. एटी आउरी डिस्ट्रक्शन करिवो ये हैला. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द ग्लास विंडो डोर, ग्लास वी कैन से दी ये हमर कोन कहले डाइनिंग सेट, व्हाटएवर मे बी द ग्लास थिंग्स आर देयर. सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इनसाइड द फर्निचर्स. स्पेसिफिकली हमें कहिबा बेड वगैरह फर्निचर वगैरह तले पसि जिवे हैला. एंड कवर योर हेड को दुईटा हाथ रे क्रॉस करिकी जनरली कह जाउची दुई हाथ को क्रॉस कर दबो, जेमति कि हमर एना मॉक ड्रिल करा हला वार पई कहि की. सो एटा वन टाइप ऑफ मॉक ड्रिल हमें कहबा. दुईटा हाथ को कवर कर दबो, मुंडो को फेस को मुंडो को कवर कर दबो, कवर करिकी से भितर पसि जिवो. दैट्स इट. एटलीस्ट हाथ को ये हेले भी हमर कोन कहबो मुंडोटा पूरा प्रोटेक्ट करिवो, हेड प्रोटेक्ट करिवो हैला. एंड यू हैव टू सिट इन दैट पर्टिकुलर एरिया. आउ तो किछ हम पाखरे ऑप्शन नथिबो, आ किछ हम चॉइस अल्टरनेटिव अछि कि नो, यू शुड स्टे काम. एपर सेपटे दौड़ी करी ये करी की से सब करिया दरकार. इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट while you are there in the home. First, if you are facing such kind of situations, first is your responsibility, you have to switch off your electricity. जाई करी फटाफट आपण कोन करिवे इलेक्ट्रिसिटी टा को स्टॉप कर देबे, बंद कर देबे, सो दैट आपण को घरे रे किछि कोनोसी प्रकार शॉर्ट सर्किट हबनी. आपण को बिल्डिंग टा फास्ट प्रोटेक्ट रहबे. जदि समस्त करिवे पर एंटायर स्टेट आउ जो इट लीड्स टू फायर, earthquake leads to fire, building fire, infrastructure fire, so many fire it will happen. So we can stop it, right? And if you are there in the outside of your home, etiki hame protection kari pariba. First thing we have to
go to the outside as soon as possible, quickly दौड़िकी जिबा, and set time रे हम staircase use करिबा, we should not use lift को use करिबानी, staircase use करिबा, and घर भितरे थिले ए टाइप रे हम protect करिया, first electricity को stop करिबा, and then we have to protect in ourselves, right, and our family. ए सब को करिबा. If you are there in the outside, बाहर अछंती, you are there in a vehicle, गाड़ी चलाउछंती, right, so quickly as soon as possible you have to park your vehicle in a safe zone, गोटे safe area रे पार्क कर देबे, जोठी की इलेक्ट्रिसिटी पोल नथिबो, गच्छ नथिबो, मन रखिबे. पार्क कोठी करिवे ना, जाईकरी आपण फ्लाईओवर तळे पार्क करिवे, तो लाभ कोन से फ्लाईओवर आसके आपण को ऊपर पसी पडिबो, पूरा सेठी सफा हो जाइथिबा. तो सेठी इनसाइड द फ्लाईओवर, nearest the building, nearest the electric pole, nearest the tree, it is strictly prohibited. एई सब एरिया रे आपण ये करिवे, पूरा खाली एरिया जोटा कि किछि नथिबो, से एरिया रे जाके फटाफट as soon as possible you have to park your vehicle, right, and you have to avoid all such kind of things. ए सब को आपण अवॉइड करिवे, एई थ्रू जाके दूर रहिबे. while you will go to the outside, जेतला आपण घर भी बाहर को दौड़ी की जाउछंती, आपण जिबे जाके बिल्डिंग रो तळे ठिया हेबे, लाभ कोन, आपण जिबे इलेक्ट्रिक पोल पाखरे ठिया हेबे, आपण जिबे बिल्डिंग साइड रे ठिया हेबे ना. You have to, it is a plain area, it is a no, means all those things should not be there, right, you have to avoid all those things. Through this you can protect yourself and as well as your family. So this is what, dear students, earthquake, how it is destructive in nature, we know that, and you have to remember what do you mean by earthquake, the concept. Apart from this, you have to remember the definitions, causes, effects, and suggestion and solution towards earthquake. एतिकी आपण मने रखिबे. आ सेठी मो मोबाइल कुआडे गला, जेतले earthquake हबो मो मोबाइल टा कुआके नै जाए, हां मोर पैसा आग धर दिए, मोर गोल्ड आग धर दिए, से सब करिवेनी. आगे निजो को बंचेबे, save your life first and your family. बाकी सब गला जहा थाउ आपण निजे को प्रोटेक्ट करके दौड़िबे. So this is what the precaution and suggestions towards the society. बुझी गले पिला माने ना कि चैट करबा को चाहउचंती स्टूडेंट्स. madam, it's okay. ओके तो Yes, अब ma'am. चैट करी, ओके चलो हैला, ए अनुसार आको मन रखिबा इंप्लीमेंट करिवे, जेते हमर हबनी ओडिसा रे केबे, हां स्टिल जदी हैला ताहले अनुसार करिबा, तापर देखिबा जा हबो. तापर चलो Mock drill हाँ? required. Mock drill. Mock drill required. So it is one kind of mock drill. So we have to protect in ourselves and family. हैला, तो सेठी आउ पैसा टंका गोल्ड मोबाइल फोन ताकू चिंता करिवेनी, आगे निजे को सेव करिवे, प्रोटेक्ट करिवे. हैला, तापर चलंतु लैंडस्लाइड्स, अनदर नेचुरल डिजास्टर. आ गुटे बिग डिजास्टर आसला, ये अर्थक्वेक पेरी नुह, एते भी डिस्ट्रक्शन करिवनी, बट इट इज ए काइंड ऑफ डिजास्टर. एठी पे हमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करिबा, बहुत सारा सिचुएशन फेस करिबा, राइट, लैंडस्लाइड्स रे. So landslides, see dear students, landslides, it generally happened in a mountain area. आमर ओडिसा रे जदि आमे कहबा भुवनेश्वर रे मैडम लैंडस्लाइड हबो कि, no, it is never. In particular this area, landslide will not happen. एबे हबनी कि केबे हबनी, right? So generally it happened in a hilly area, in a mountain area, landslides. The things will flow top to bottom, जोटा कि ऊपर तळु किए फ्लो करिवो. Generally landslide, it is a wide variety of things. It will down in a slope. It will movement towards the down area. It will movement most of the things in the down the slope. Means it will movement the movement of earth down the slope, earth madhya down the slope ko asibo. It will movement the basically what, the different kind of rock, different kind of debris, different kind of trees, no, all those things it will down the slope or down ko asibo. Why? Due to the gravity, due to the influence of the gravity. Jette सब material thibo, she pure down the slope asibo. The movement of the earth, the movement of the debris, the movement of the rock, the movement of the trees, the movement of everything
it will move down the slope. तो तला आड़ को पूरा मूव करके आसीबो जोटा कि आपण एडी एग्जांपल रे देखि परबे मोइटी देखैछि देखो तो दिस इज द काइंड ऑफ लैंडस्लाइड जोथिरे कि कोन डिस्ट्रक्शन हबो वी नो दैट हैला आपण ऊपर गोटे एग्जांपल देखि परिबे तळे ऊपर एग्जांपल इट इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ एटा अर्थ ता पूरा मूव करिछि डाउन द स्लोप पूरा अछि रोड ता ऊपर अछि तळे पूरा आपण को डाउन अछि सो एंटायर अर्थ इज मूवमेंट टुवर्ड्स द डाउन द स्लोप जदि आपण फर्स्ट स्लाइड ता देखिबे सेकंड the movement of the debris rock trees everything it moved down the slopes पूरा सब किछि पूरा नै कि आसी धसै कि आसी हैला सेमती लाइकवाइज आपण ए सब देखि परिबे सो द प्लेन सरफेस एंड अर्थ सरफेस हाउ इट इज बेसिकली destructive in nature if we can take the example of in our country like India where it is happened कोठी एटा पिला माने होथुबो कहिले हमर जदी कहिबा हम इंडिया रे एटा अत्यधिक परिमाण लैंडस्लाइड कोठी होची कहिले उत्तराखंड साइड में उत्तराखंड Himachal Pradesh, हाँ, Uttarakhand. हाँ, बस हेलो उत्तराखंड disaster it was happened in the past we know that no उत्तराखंड disaster कोन करिथिला destruction due to the cyclone due to the landslide due to सबु मु कहिना गोटे natural disaster 10टा natural disaster को नै कि आसीबो सो हमें आखि आगे देखी एट द ईयर ऑफ आई थिंक 2017 की 18 नहीं ता पूर्व हम 14 की 15 हम बोधे हाँ 5 वर्ष पर्यंत बंद करदेला से बद्रीनाथ केदारनाथ सब एरिया को सब बंद करदेला राइट सो अल्टीमेटली 5 years क्लोज करदेला से सब को एंड कौन डिस्ट्रक्शन हेतिला हमें जानिचे ड्यू टू द फ्लड ड्यू टू द साइक्लोन ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट रेन एज वेल एज द लैंडस्लाइड राइट So the landslide prone area in our country, highly destructive in nature. People face many things, no? So that we can take the example that is Uttarakhand, Jammu and Kashmir, generally, Arunachal Pradesh, and all the Himalaya regions. Himalaya regions में जितने सब अच्छी तो सबू है ला कौन कहिले landslide area, right? So एठी हाईली पीपुल आर कारण पूरा रहउची पहाड़ बहुत ऊपर लोक माने बहुत तळे रहउचंती सो बेसिंग ऑन दिस कोन होची पहाड़ पूरा सब बेले खसुची जोथरे कि रोड डिस्ट्रॉय करची सब किछि डिस्ट्रॉय करची सो ए सब होला हमर कोन कहिले ना ए सब होला हमर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया एंड इट इज समटाइम्स लैंडस्लाइड इट इज वेरी फास्ट मूविंग इन नेचर बहुत फास्ट मूव करिवो जोटा कि आपण जानिबा पूर्वरो एज लाइक एज अर्थक्वेक राइट जानिबा पूर्वरु से ही जाइथिबो एइना जदि हमें कहिबा एई लास्ट मंथ रे गोटे जदि हम एग्जांपल नबा हमरो टेररिस्ट अटैक पूर्वरु जस्ट तार गोटे दिन पूर्वरु हैला हमरो ये श्रीनगर रु जम्मू कश्मीर मझिरे गोटे अछि रामबान हैला सेठी रात्रि लोक माने सब जनरली स्टे करंती श्रीनगर टू जम्मू कश्मीर गला बेले स्टे करंती जा न्यूज रे देखौतला हां रामबान सेठी रात्रि सब सोइचंती लैंडस्लाइड एमिति हैला जोटा कि लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड एमिति नै कि आसिला जोटा कि फोर्थ स्टेयर बिल्डिंग को सब माने कोन कहिले पूरा ये करनेला पोती देला चारतला बिल्डिंग सब रात्रि सोइचंती 2टा 3टा रात्रि हां फोर्थ स्टेयर बिल्डिंग को सब को जस्ट गोटे दिन पूर्व टेररिस्ट अटैक रो गोटे दिन पूर्व रामबान रे फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड राइट सो ये कोन कहूची कहिले it is sometimes it is unpredictable in nature as like as already I told you and sometimes it is basically very slow movement very fast movement and very slow movement धीरे धीरे कि आस्तबो जेटा कि हमें प्रेडिक्ट करतबा और सेठी लेखा जाइथिबो it is landslide prone area तो पूरा ये करा जाइथिबो don't move in this particular area कहि कि गवर्नमेंट से प्राय एरिया को सील करे right so it is basically we can say it is the हमें कौन करिबा ना एटा डाउनवर्ड मोमेंट हबो ऑब्वियसली एंड ड्यू टू दी ग्रेविटी हमें कहिले तो जदि हम एटी कहिबा देखु नांती सब आगो डेफिनेशन कौन करिछि ऊपर को पळैछि एनीवे मु काली को सजार देई पिला माने पुनी चेक करबी हैला जदि हम एटी लैंडस्लाइड कौन कहिबा मु ऑलरेडी सब कहि सारलेनी नो लैंडस्लाइड मींस इट इज अ मूवमेंट ऑफ मास ऑफ लैंडस्लाइड कौन करछि रे एटी मूव करूछि कोन ना मूवमेंट ऑफ मास huge amount of mass of rock
डेब्रिस रॉक माने ला पत्थर, डेब्रिस माने ला छोटे छोटे जो ये सब हाँ रॉक डेब्रिस अर्थ इट मूव डाउन ए स्लोप कौन करिबो मूव करिबो डाउन को जदि आम ओडिसा रे कहबा कंधमाल कलाहांडी से एरिया रे बट सेते भी हमर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया नुह स्टिल दैट एरिया इन ओडिसा specifically we can say in that particular area landslide can happen, right? So it is the kind of things will happen. kahin ki hue generally pila mane what are the causes of landslide? Some natural causes are there and some man-made human causes are also there. apai monisha bi dayi apai nature bi dayi. nature kon karchi na already I told you due to the earthquake is a primary factor. And if it will happen in a hill and mountain, it leads to landslide. Already I told you. Jota ki huge kind of destruction will happen in that particular area, right? Due to earthquake, due to movement of the tectonic plate, it will happen due to the gravity. It will happen in a hilly area, mountain area. So it leads to landslide. Due to tsunami, natural disaster, earthquake leads to tsunami, and tsunami leads to landslide. देखो सब इंटर रिलेटेड अच्छे समस्त सहित earthquake if the earthquake will happen in a ocean sea then it leads to tsunami and tsunami leads to landslide. tsunami जते बेला आसीबो सब डिस्ट्रॉय करिकि जीवो लैंडस्लाइड करिकि ध्वंस करिकि जीवो. it also the landslide due to the flood जेतले फ्लड हबो कंटिन्यूअसली पानी चारियाडे भर्ती हेकि रहिबो फ्लड रे से कोन करिवो तार जते सब ये ग्रेविटी को से धीरे धीरे लूज करके से कौन करिवो लूज लैंडस्लाइड करिवो. ड्यू टू द वोल्केनिक एरप्शंस ड्यू टू द साइक्लोन इन साइक्लोन स्पेसिफिकली हाई स्पीड ऑफ विंड बहु परिमाण रे हेवी हाई स्पीड ऑफ विंड also leads to landslide. बहु जेतले बेसी स्पीड रे पवन हबो मोर देन जेमति हमर हेतिला सुपर साइक्लोन द विंड स्पीड केते कोन पठिबे हम आगे रे जाई कि केते परिमाण रे विंड स्पीड थिला सेमति हेले कोन हबो सब पहाड़ ध्वंस होई जिवो एंड लैंडस्लाइड करिवो. and high speed of wind apart from this due to the cyclone or without cyclone madhya high speed of wind can be possible, right? and apart from this heavy rain continuously rain hela ta mane kon habo the it will lose the kon jo amaro soil to ye ta ku pura lose kar dabo capacity of the soil, right? so continuous rain heavy rain cloud burst rain jota ke cloud burst rain heitila koti amara uttarakhand disaster re cloud burst rain. so cloud burst rain heavy rain continuous rain also leads to landslide. आमे इना एग्जांपल जदि नबा प्रति वर्षा दिन रे रेनी सीजन रे सब जगह से जो एरिया में कहिले जम्मू कश्मीर हमर कोन कहिले हमर हिमालय रीजन्स जम्मू कश्मीर उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश ए सब एरिया केवल लैंडस्लाइड प्रति दिन टीवी रे देखुतबा आज एठी हला सेठी हला एमती हला एते लोक ये कले एते इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय गेला सब दिन न्यूज़ रे देखुतबे हला. सो दीज आर सम रीजन ऑफ बेसिकली आम ये कौन कहवा ना आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन नहीं परिबा ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर. जदि फॉरेस्ट रे ऑटोमेटिकली ड्यू टू द हीट वेव इन द समर सीजन जदि फॉरेस्ट फायर हैला देन अल्टीमेटली कौन हबो ना हमर गछ सब तार डिस्ट्रॉय हो ऑल द इंपोर्टेंट ट्रीज इट विल डिस्ट्रॉय लाइक एनीथिंग destroy plant destroy the entire important plants of the mountain then ye kon karibo the soil erosion it relates to soil erosion. so soil erosion means landslide, right? so these are some most natural reasons due to the landslide can be happen. and if we can say the causes of human man made cause jodi man मनुष्य कोन तारो ये करूची जोटा पय landslide हुए generally ame कहबा due to the deforestation, cutting of unlimited trees for construction. भुवनेश्वर जदि देखिबो चारियाडे घर ही घर बिल्डिंग ही बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही इंफ्रास्ट्रक्चर कोठी भी नाही टोटाली गोटे ये जोटा कि हम किछि गच्छ प्लांट करि परिबा ग्रीनरी एनवायरनमेंट क्रिएट करि परिबा जो रेट रे बिल्डिंग होइछि से रेट रे हमें हमर ट्री अछि नो. so due to the deforestation
due to the unlimited cutting of trees for infrastructure, for building, for basically we can say the bridge, for any kind of constructions, no? So this is the another, human being also contribute a lot for destruction. Due to landslide can be possible, right? Apart from this landslide, constructing of road on mountains, जमती कि आमे माउंटेन रे रोड कंस्ट्रक्ट करछे, बद्रीनाथ पे रोड कले, केदारनाथ पे रोड कले, जते सब हिली एरिया रे आपण रोड कले, नाथुला जिबे रोड कले, जते सब आपण हिली एरिया रे रोड बनेबे. So road बनेले ultimately construction of road in the on the mountain. So now ultimately what will happen? The gravity, the mountain will lose its gravity. Then ultimately it will fall down to everything will fall down the slope. सब किछि धसई आसीबा आपणकर, right? Apart from this mining activity, ए सबु मध्य हेला हमर कोन ना गोटे गोटे human causes, contribution by human towards the destructions, right? तो आर इफेक्ट्स कोन हबो जदि हमें कहिबा what are the effects of the landslide, बहुत सारा इफेक्ट देखेबो. कोन ना इफेक्ट हेला जनरली हमें जहा जहा पढिले पिला माने अर्थक्वेक रे से इफेक्ट आपण सबुठी को एक्सटेंड कर देबे. हमें अर्थक्वेक रे कोन इफेक्ट पढिले ना, it will destroy the economic condition, it will destroy the infrastructure, it will affect the people, pets, animals, jaha सब earthquake रे पढ़िले effects that you can extend towards the landslide, that you can extend every natural disaster, you can extend it, right? गोटे जगह रे मने रखिबे सब जगह को ताको extend करिवे, right? So apart from this आर गोटे most important reason मध्य अछि, आ गोटे destruction अछि जोटा कि आर कोन effect देखैबो ना, river get flooded and change their path. ता माने कोन मैडम एठी हबो, धर तो तळे रिवर नईटा जाउची, river is there and ये आसिला landslide हैला आसिकी पूरा entire कोन हैला river टाकू तमरो ब्लॉक कर देला. ता माने कोन हबो, से river तो बोहिबो से तो जीवो तमे तो ताकू बंद स्टॉप करि परिबोनी. से कोन करिवो, the river will change its route, the river will change its path, change करिवो तार path को, तार route को करिके कोन करिवो, से घरे गां रे पसिबो, से एग्रीकल्चर रे जिवो. सो चारियाडे से कोन करिवो, another destruction हबो. So ultimately we will face the very huge things of effect, it will affect the communication. बहु परिमाण रे जनरली लैंडस्लाइड कोन करा जाय पिला माने कम्युनिकेशन ता बहुत परिमाण रे इफेक्ट हबो. केमिति देखो एटा हला रोड रो मझिरु पूरा कटि गला, जेते गाड़ी आस्तला सेपटे रहिले, जेते वेहिकल आस्तला एपटे रहिले. सेमिति जो माने जानती जनरली हमर उत्तराखंड रे जनरली ए सब सिचुएशन जेते बेले हुए, उत्तराखंड हला जम्मू कश्मीर जो जानती दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन सेमती रोड रे बसतिबे, फाइनली आपण से डेस्टिनेशन रे पहुंच परिबनी, बैक करिके आपण को घर को आसीबे. बहु कष्ट रे गवर्नमेंट ये क्लीन करिके सब घर को आसीबे हैला. सो अल्टीमेटली हाईली इट अफेक्ट कम्युनिकेशंस, राइट? एंड आल्सो इट लीड्स टू मेनी थिंग्स. इट डिस्ट्रॉय सब करिबो as like as earthquake, but apart from this highly it disturb the communication system of the people. लोकों का कम्युनिकेशन सिस्टम टाको पूरा डिस्टर्ब कर दबो, जोटा कि सेमिति बस्तिबे एंड यू विल कम बैक एंड यू कैन नॉट रीच इन योर डेस्टिनेशंस. एमती बहुत थर हेची लोक माने प्रैक्टिकली जोटा कि फेस करचंती बहु लोक, राइट? सो दिस इज द बेसिकली हमें कोन कहबा पिला माने एठी ना, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट इज लैंडस्लाइड, व्हाट इज द कॉजेस, इफेक्ट्स एंड व्हाट आर द कोन कहिले कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड. आकु पूरा क्लियरली मने रखिबे हैला. बुझी गले कि छोटे छोटे चैप्टर आगो क्विकली पढ़ी कि जिबा, कारण एमटीआर हमर गद्दा आइची सब चैप्टर. बुझी गले कि पिला माने स्टूडेंट्स हैला. ये लैंडस्लाइड रे आ गोटे मेजर जिंस हैला, जेतेले लैंडस्लाइड वे इट डिस्ट्रॉय द क्वालिटी, मींस द इंपोर्टेंट ट्रीज, इंपोर्टेंट प्लांट्स ऑफ द नेचर रो देखिबे बहुत भलो भलो मेडिसिन प्लांट, इंपोर्टेंट प्लांट, बहुत भलो भलो जिंस आगो सब नेचर रो नष्ट कर दिए, कारण से सब आगो आसिके डिस्ट्रॉय हो जाए. सेटा गोटे बड़ इंपोर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू लैंडस्लाइड्स, राइट? आ के कोन कहउतिले कि पिला माने कोन तो पिला माने
Next about avalanches. Hela. देखो ये है avalanche. ये है avalanche. Generally, avalanches, it will not happen in Odisha. Madam, amar it habo ki? Na amar it kebe bhi habani. Because we are not there in a snow area. Avalanches, generally, it will happen in a snow mountain. Snowy mountain, snow mountain, snow hill. If we will take the example of snow mountain, snow hill, जदि हम example नबा, हमरो कोटी पिला माने Nathula, all the Himalaya regions, Siachen, हमरो India and China border. Siachen is a kind of means it is a snow hill, it is a snowy mountain. It is 24/7 and 365 days. Army peoples are there to protect, specifically to give protection to us, to India. Na? Our soldiers are there. Say jo amar Siachen border re. It is a completely a temperature for our ye jodi kahiba sabu bale -30, 40 empty degree re generally rahe. And communication, it is completely stop communication in that particular area. Any generally to layman को बंद करा है जाइची समान जाई परिबेनी हला किंतु अदर जो माने जिबे अन्य माने जो माने जिबे समान को पाइन बोले it is also strictly prohibited. गोटे सेकंड पिला माने right. So it is basically, now we can say the avalanches, it is there in a kind of snowy mountain and snow hills. We can take the example of Himalaya regions, Siachen, Jammu Kashmir, Ladakh. These are the different area that basically avalanches can be possible, right? And due to the avalanches, again, why the avalanches is there? Due to the movement of the tectonic plate, due to the earthquake, due to the various reasons, the avalanches can be possible. And in this particular area, wait a second. Now, in this particular area, the mass of snow, while in a we can say the landslide, happened due to the mass of rock, debris, or down a slope. Likewise, here mass of flow of snows, it will basically move down a slopes. It kiye move karibo? It is snow move karibo. Kuade na down a slope. Slope ko tolu ko ye move karibo. Mountain ro tolu ko. को रेट रे करिवो देखो एटा ए एमती कोन छोटिया मोटिया ये अछि if आमे जदी देखिबा आ भितर पोती हिगिरी माने समस्त रह जिबा एते हाईली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर राइट avalanches पूरा माडी आसीबो पूरा कोन कहिलो प्राइस माडी आसीबो पूरा लाइक ए वाटर जेमती हमर पानी माडी आसे नि क्विकली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पूरा ये कर दिए डिस्ट्रॉय कर दिए सेमती स्नो माडी आसीबो पूरा भाबीबा पूर्वरु सब पोती हि जाइथिबो. So this is what basically we can say avalanches. And here, avalanches means, what do you mean by avalanches? Avalanches means it drag down a large area of snow, it including debris, it including rocks, it including everything, it down a slope. Everything it will drag in down a slope. So ultimately, the causes, we know that what are the causes of avalanches? Due to the force of gravity, due to the movement of the tectonic plate, due to the earthquake, right? The movement of the tectonic plate, due to the force of the gravity, already I told you in the landslide, right? Due to the cloudburst, continuous rain, heavy rain or cloudburst rain also can be possible. Due to the warm temperature, it means it leads to global warming. Due to the heat wave, due to the warm temperature or due to the global warming, also it leads to, basically we can say, avalanches can be possible. So these are the various causes. We can say it is the natural causes. Due to some natural causes, the avalanches, it can be happen. And while it will happen, and human causes ultimately, right? Due to the explosion activity, due to the deforestation also lead to global warming.
pollution also leads to global warming, and global warming leads to melting of ice, melting of snows in the Himalaya regions, melting of ice, melting of snows in the snow mountain. And that it is the most important factor, dear students. The global warming is such kind of situation. It is the man-made factors, no? Global warming. Due to this only, the most of the avalanches happened in the present environment, right? Gravity and earthquake, it is a kind of things is there. But if we can analyze this due to only it is the most important factor, it is a global warming. Due to this only the avalanches is there, huge kind of avalanches is there in the present environment, right? Due to the warm weather. Due to this only the melting of ice, melting of snow is there. And it dragged down everything down a slope. That is a war due to the warm weather, right? And also due to the heavy rainfall, due to the high-speed wind, heavy rainfall, cloudburst rainfall. Also, it is the reason to do the avalanches. It is another reason. So these are some causes, natural causes as well as the man-made causes. But man-made causes, it is the most important factor is the global warming and pollutions. Due to pollution leads to global warming, and global warming lead to the heat wave and warm weather. That's why ultimately it destroys everything, right? And the natural causes due to the gravity, due to the earthquake, due to the cloudburst rain, due to the high-speed winds. These are some natural causes. Also, the causes of what it happened, the avalanches, right? And if we can analyze what are the different types of avalanches, it relates to what? Now, there are 4 types of avalanches, right? Now, 4 types of avalanches, it relates to loose snow avalanches, slab snow avalanches, large snow avalanches, and small snow avalanches. Loose snow avalanches, you can take the example of low snow avalanches. This is a loose snow avalanches. Loose. Like a loose snow, basically it is a things like a rain. Loose, soft snow thibo. Loose or soft snow we can say. ଯେମିତି କି ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା ଯେମିତି ଫ୍ରିଜ ର ଆମର ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେମିତି ସ୍ନୋ ଆସିଯାଏ. So that is a low snow avalanches. It will happen. And slab, you can see this slide here, right? It is a slab snow avalanches. It's a big kind of things, no? And it is very hard in nature, right? जो आमर जदि आम गोटे एग्जांपल नबा आमर ये टाइटेनिक टाइटेनिक जेते बेले आसिक हिट कला गोटे स्नो ये हिल को टाइटेनिक डिस्ट्रॉय होबार कारण कोन जानछ पिला माने से जेते बेले सब बेले सेई रूट ते की जाए जनरली सेई सी रे सेई रूट ते की जाए तो इन दी मेन टाइम कोन हेची जेते बेले टाइटेनिक आसिला सेठी गोटे हठात रूपरे गोटे पहाड़ हो जाइए. अरे से गोटे पहाड़ कहीं भी हम जनरली तुम कह सब बेले से रूट देखिए मुव करे जो टाइटेनिक मुव कला हठात रूप से आगे गोटे पहाड़ देखागला. से पहाड़टा कौन जानिच से पहाड़टा है स्नो हिल. ऑटोमेटिकली स्नो रे गोटे हिल क्रिएट हो जाइथिला हैला जोटा कि स्लैब अवलांचेस आमे कहि परिबा. स्लैब काइंड रो माने गोटे ये हितला गोटे पहाड़ हो जाइथिला हिल रो स्नो रो. तो अल्टीमेटली जिते बेले आसला टाइटेनिक सेते बेले देखला फ्रंट रे तो किछि नथिला हठात काडे सी तार कंट्रोल को ये करि पालानी कारण बहुत नियरेस्ट रास्ता हितला. इट इज वेरी मींस डिफिकल्ट टू मूव. एटा कोन हेची स्कूटी बाइक हेची आमे बुलेते की पळेबा तो करि पालानी देखि बाडी हेला कहा कहा को ना सेई जो स्नो माउंटेन को स्नो हिल को. So ultimately we know what was the consequence we have faced, right? So consequence time already हम आखि आगे देखे that we can take the example of slab हमें कहिबा avalanches. से kind रो avalanches हुए जेमति कि आज लाइक सेटा गोटे एग्जांपल नेले से टाइप रो avalanches सब माने माडी आसीबो डाउन ए स्लोप, right? And हमें जदि देखिबा एठी कोन ना large snow avalanches, small. Large means it will destroy in a large area. The density of destruction it is very high, right? The destruction it is very big. It will lose the property, it will lose the life, it will lose everything, no? And it is small, the destruction is very low ultimately in comparison to
large avalanches. And middle, ultimately, ame kahiba large or small ro majita rahila middle, right? It is very destructive in nature, large avalanches, and small avalanches, it is basically, we can say, it is as comparison to large, it is somehow it is small. It can be small in nature, right? So these are the things of types and the things of avalanches. Ultimately, you can extend the effects of avalanches. We can extend the what effect we have faced in the earthquake, what effect we have faced in the landslide, that effect we will face in the avalanches also. It will affect the human life, already I told you, affect the infrastructure, affect the property, affect the communication, affect the road, affect everything. No? Hello. So it will basically, we will face lots of problem related to landslide, related to earthquake, related to what? Now avalanches. So everything, it is a kind of natural destruction. We cannot control it. Neither we can control earthquake, nor we can control avalanches, nor we can control landslide. It will happen. But ultimately, if we will take some step as a human being, we will not destroy the nature, right? We will not destroy the natural factors and we will not kill the nature. Then ultimately, somehow it can be जो परिमाण डिस्ट्रक्शन होची सेटा को हमें मैनेज करि परिबा हैला सेटा को हमें कम करि परिबा हमें तो स्टॉप करि परिबानी ऑलरेडी आई टोल्ड यू नेचुरल डिजास्टर इट इज अनकंट्रोलेबल इन नेचर वी कैन नॉट स्टॉप इट but we can take some precaution, we can take some steps so that we can manage it, right? So through this, if the human being will take all the person or every society, every individuals, if we will take this step, then somehow we can manage it. We can basically maintain it. बुझिलो कि पिला माने? Yes ना, students? पिला माने? Yes, ma'am. पूरा clear ना? हेला? तो सुनो? Yes, ma'am. Okay. तो सुनो? Yes, ma'am. Today we have discussed what? Now we have discussed concept of disaster management. We have discussed what are the types of disaster. We have discussed what is earthquake, landslide, and avalanches. What are the causes, effects, and solutions? What are the steps we will take to manage it? You have to remember this much. Tomorrow I will start from the avalanches. Avalanches to more start करिवे पिला माने आज तमरो 5 o'clock रे क्लास थिला मोरो आ गोटे क्लास हैला सेइथि पय मु ए क्लास टा गु तमरो मोर आज 9 to 10 o'clock थिला तो सेइथि पय मु एक्सटेंड कर देली सो 5 o'clock to 6 o'clock टा 5 to 6 o'clock 5 to 6 जो क्लास टा थिला सेटा मु आउ आज नेबिनी हैला काली को tomorrow at morning 9 o'clock I will take the class. हैला बुझी गलो ना पिला माने 5 o'clock रे Okay, ma'am. 5 o'clock रे ओके जॉइन करिवनी हैला थैंक यू Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Have a Okay. nice. थैंक Thank यू you, ma'am. थैंक यू गुड डे